So we are live. Hey, good evening. Wherever you are, whichever part of the country or the world, I am A.R. Khan, or known as Dr. Khan from KSG. It is extremely delightful to welcome you all on this very special evening that we have got today. And uh, today we are going to spend some really quality time, and then I'll be joined with my esteemed colleagues, Mr. Mrinal, Mr. Saurabh, Mr. Ankit, and Mr. Ved, who would be also sharing their views with you, and then you will have a complete picture. PT Shala, I suppose I would like to tell you that is a thing which I'll explain to you as to why I started PT Shala, and then what was the philosophy behind the starting PT Shala. I like to explain that to you a little later, but then let me just first tell you that you have worked very hard, isn't it? I mean, you have worked very hard. You have prepared. You have got all the notes. You have got all the material, and you know from where you can pick up what information. I mean, that's something which is now at the click of a button that you have got. You still with me. You're still spending this evening with me, and that is what we call it as epistemic humility. You have epistemic humility because you are not sure. I mean, you're not sure. अगर इसको हिंदी में बोले तो that's called as एपिस्टेमिक को हिंदी में बोलेंगे शायद ज्ञान संज्ञान संज्ञानात्मक विनम्रता. ह्यूमिलिटी इज विनम्रता. सो आई मीन यू हैव दैट, बट यू आर वेरी वेरी अनश्योर. आपको इतना होने के बावजूद भी आपको ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन होंगे, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर, क्या मुझे उस समय याद आ पाएगा, कैन आई रिमेंबर दोज थिंग्स एट दैट टाइम और नॉट, और how I'm performing vis-a-vis others. These are a lot of things which keeps you like humble. And then negative तो ज्यादा नहीं हो जाएगा. I mean, lot of questions that you have got. और बाकी लोग का तैयारी कैसा है, कट ऑफ क्या होगा, सी साइड का लेवल क्या होगा, ट्रेंड तो चेंज नहीं हो जाएगा. The lot of things that we have got that is actually is one examination where the largest number of people fail. And then that's the reason people are always very scared, very scared. डर लगता है, सबको डर लगता है. And I think there is something called as attachiophobia, fear of failure. I mean, fear of failure is very high. I mean, attachiophobia is fear of failure that we have got is very high in this. And then there are lots of reasons. And let me tell you one thing. It is last year. Yes, right. I mean, I'm not telling the name of the person. And I think, I suppose, a person who is qualified as an IPS did not clear PT. So can you imagine what is the level of exam this we have got, PT examination? Somebody who had a fantastic rank and then could not clear PT. I don't want to scare you, but then the reality is like that. I mean, you have people, even after clearing the very previous year, they are not able to really clear the subsequent year PT examination itself. And that is the level of examination that we are talking about tonight. And then there are lots of reasons for the fear that you have got. And I don't know. I'm not telling the name. I think I can share. वो मेरे पास आए and then वो बोले कि सर मैं को बिल्कुल परेश रावल याद आ रहा है. I mean, because he did not go for foundation, and then he said that कि मैं बस मेंस देकर जाऊंगा और पीटी क्लियर नहीं हुआ था. बोला कि सर मेरे को तो बिल्कुल परेश रावल की तरह फील हो रहा. मुझे क्या हो गया? बोला कि मेरे को ऐसा लग रहा है उठा ले रे बाबा. मतलब वैसी फीलिंग आ रही है कि मैं सब कुछ स्टेक पे लगा करके, एंड आई एम सिटिंग हियर वेटिंग फॉर गोइंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन एंड पीटी क्लियर नहीं हुआ है. That is really the kind of question that we have got here. In fact, this at PT attachiophobia ka, there are a lot of reasons that we have got. One reason that you can imagine is कि
You have syllabus छूटने का FOMO रहता है, CSAT का डर रहता है. I think टाइम वेस्ट हो गए यहाँ वहाँ कहाँ. उनके हिसाब से ही partied a lot after becoming an IPS. So I suppose वो भी एक फैक्टर रहता है. Overload of expectations be as a factor that you have got, because most of you have never failed in life, and PT is one examination. I have large number of people who faced first failure of their life was in PT examination. तो वो भी एक expectations भी रहता है. And then I think बहुत तरह के फैक्टर हैं. I think इतने बड़े बड़े लोग जो अच्छे अच्छे रैंक्स लेकर के आते हैं, बड़े अच्छे कॉलेजेस से हैं, फैंटास्टिक पेडिग्री दे हैव गॉट, एंड येट दे फेल इन पीटी. The point here this evening is not to scare you, but only to make you realize about the actual situation that you have in front of you. 1 marks, maybe a part of marks, also is equivalent of 1 year wasted. And a lot of confidence pe doubt ho jata hai aapko, and that is where we have got a problem. I think I would like you to actually, based on my experience of 30 plus years, I would like you to make a small list. मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने पास ना एक पेन और पेपर रखें. If you have pen and paper, you would basically tend to write certain points, because quite a few of you are going to hear for the first time lots of points, and that is what I am basically sourcing from my research. और मैं उसमें से दिखाता हूँ कि कौन कौन से कमियां रह जाती हैं. बड़े बड़े IAS के एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और सिलेक्शन रुक सकता है इसकी वजह से. That is a thing where I'm going to identify those छोटी छोटी गलतियां जो आप ना करें. Those small mistakes that people commit, I don't want you to be committing those mistakes. So try and see that this is something which is very clear to you in your mind. In fact, the first thing which I would like to tell you is that one mistake which I have noted, and that's very common to lots of people, you can find out from people around you. One is input hoarding. Input hoarding has been a big mistake. आज हम लोग बात करेंगे कि कौन सी वजहों से लोग फेल करते हैं, कैसे ठीक करें, और कैसे हम आपको इस पीटी शाला के अंदर, how I'm going to take you through this entire thing, and then what is our scheme of things, which is a foolproof method that you would be getting in this. So if I basically try and see as to why people fail, I think one reason I can, based on my experience, say that is input hoarding. And then that basically जो बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो जाएगा, तो यू विल सफर फ्रॉम रिवीजन डेफिसिट सिंड्रोम. I call it RDS or RDD, some people call revision deficit disorder, whatever word you want to use for it. And then आपके पास illusion of knowledge होता है, but you are not able to clear the examination just because आपने उसका revision नहीं किया होता है. A lot of people keep coming telling me that, sir, I collected all the information, I knew all the information. Since I had not revised and the options were so close, I messed up. And then let me tell you one thing, revision has never been exciting. Because when you're learning something, you get the dopamine, and that dopamine in revision doesn't happen. And that is why people kind of avoid revision and just continue. So one big mistake people commit is input hoarding, and I like you to stay away from that. And then the other reason is that people start for PT preparation very, very late, especially mostly after the होलिका के दहन के बाद start करते हैं, या फिर जाड़ा थोड़ा कम हो जाता तब start करते हैं. And that's not the right approach for doing it. In fact, you have to be preparing for your PT earlier, I can say. And then quite often the people end up doing generic study. ये किताब पढ़ लिया, वो किताब पढ़ लिया, और सारी किताबें पढ़ ली, and then पॉलिटी पढ़ ली, इकोनॉमी पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, साइंस टेक पढ़ लिया, करंट की बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली. And then what you have got, like I think एक लो रैम पे अगर आप डाल देते हैं too much of input, तो आपका प्रोसेसिंग तो zero हो जाता है. And that's what precisely happens, because they make generic study, and that is also a problem. Another problem is that CSAT का ignorance. I suppose CSAT का level हमेशा बढ़ता जा रहा है, and then a lot of people, quite often in complacency, they just avoid CSAT. They don't really give much attention to CSAT, and that could be also a problem. Another a very minor point which I find
And I like you to keep writing them so that, I mean, you are aware that these are the reasons why people have come back and told me that this is why I did not clear the examination. So if you find that these are the possible reasons, मैं आपको एक simple सा reason बताने वाला हूँ, and that is attention pause. During bubbling, what happens? I mean, you are very concentrated when you're reading, but then a lot of time I have found that people attention is very low when they are shading those bubbles there, and then that attention pause that they have got, that basically make them sometime उसी को का A और उसी का D लगा देते हैं. I don't want that to happen, and this has been a reason for more than one student in my career who've come back and told me that, sir, it was like very messy. So you have to be very careful about that also. And there's a trap of completion. A lot of people do not do test नहीं करते हैं लोग, एग्जाम नहीं देते हैं, because they basically want to do completion. और completion भी क्या? With a good quality and also with full satisfaction. And I keep telling all of you that completion, quality and satisfaction, that is a Bermuda triangle, and उसमें नहीं फंसना है आपने. And that is a serious reason that we have got a lot of people fail, and that is because I suppose they are not able to use the information well. In fact, कुछ लोग तो इसलिए भी फेल करते हैं कि they take too many advices and they keep changing their methodology, and then too much of changing or sticking to just one methodology which doesn't work, both ends are wrong. So you have to make an optimum decision, and then I suppose ये एग्जाम वैसे भी अगर मैं बताऊं तो it is not an exam for knowledge and then the context that we have got. This is a recall context examination, not the knowledge context examination. So I suppose it is important that we should not ignore this. And also, this may sound a little small reason, but then that has been also a reason. Health. A lot of people have kind of ignored their health. When I say health, I mean physical health, mental health, and also emotional health. And a lot of people have ignored that, and that has also been a cause of failure of for the people. And then another reason, which I think most of you do not really count this as a reason, is passive preparation. When I say passive preparation, I basically mean that you're reading, you're underlining, you're marking, and then sab kar rahe aap usko, and then you are making notes, and then making notes ka note. But then, and I think that's not something which is important. Active reading is that when you're trying to recall from the mind that you have got. This exam, as I told you, that is about the recall, not for packing thing in your mind. And then also, a lot of time, effort glorification has also been a cause of concern to me. I mean, I think I have done 15 years के PYQ कर लिए मैंने, ये किताब भी मैंने पढ़ ली है. I think 7-8 hours में पढ़ता हूँ. Or I think there are a lot of people who are like, I suppose, I don't want to say like this, but then there are a lot of people who are library bhaiya and library didi. I mean, they have been sitting, and some of them, very sorry to say that, some of them are older than the library itself. So library के बनने से पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोग. They have a lot of information, and they are only packing and packing and packing information. What is important for me is to retrieve. तो आपको लाइब्रेरी भैया, लाइब्रेरी दीदी नहीं बनना है. आपको information retrieval करना है, and I think in PT Shala we're going to tell you about that, how we are going to really take you through that. And it also, I mean, another reason this may sound a little weird, but then I think that's also true, and some of you may be suffering already. I mean, that's why I told you that you write down because not by listening just now, but also writing and seeing that मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा है ना. एक है learned helplessness, एक psychological problem है. Learned helplessness मेरे को article याद नहीं होते. ओ इकोनॉमी के concepts नहीं समझ में आता. ओ geography का location वाला question नहीं बनता है. I mean, you tell yourself certain things, and then you start believing in them, and that is called as learned helplessness. And I think that is also a reason why people, you're not different from anybody else. किसी और का हो सकता है तो आपका भी हो सकता है. And that thing, that's something which I basically am interested. And then also, ये learned helplessness has been a reason which a lot of people have been suffering from, and I think you should not. एक और problem है जिसको मैं इंटेलिजेंस हैंडीकैप कहता हूँ. कुछ लोग बुद्धि बहुत चलाते हैं, दिमाग बहुत चलाते हैं. इंटेलिजेंस हैंडीकैप.
I mean, hyper rationalization करते हैं वो. I mean, in a way, I can say they invent complexity. Complexity का आविष्कार कर देते हैं. And then that's something which is actually lot of simple questions they mess up. और मैंने खूब देखा है जिनका optional geography होता है, they commit mistake in geography questions. So this intelligence handicap is also a serious problem, and I am sure that you should ensure that you don't have it at all in this. I suppose what I was trying to tell you is that कि कौन से reason है जिसकी वजह से लोगों को डर लगता है, कौन से reason जिसकी वजह से लोग fail करते हैं. I think I would like you to, in this backdrop, bring PT Shala for you. Let me tell you PT Shala as to how it happened. In fact, you know that a person of my age and my experience normally would not be involved in PT examination, because normally ये लोग सोचते हैं कि नहीं आप तो अब senior हो गए, आप PT पे नहीं. But I think there is a specific reason. I was observing during mock interviews several students who were in attempt number 3, attempt number 4, attempt number 5, and they were exceptionally good. I asked them कि क्या हो गया अभी तक 4 attempt कैसे लग गए आपसे? And they would always say that सब PT नहीं हो रहा था. And that basically made me realize that कि अगर कुछ अच्छे student अगर उनको PT के अंदर right guidance मिल जाता है, at least they will ensure that in the first attempt itself their PT is clear. And that is where, in that backdrop, last year we introduced PT Shala. And then I think with a lot of experience that we did from the last year, in fact, we had a fantastic observation. And then in a much more advanced form that we have brought lots of technology that we have got. And through that, we are going to take you through ensure that you crack the PT in 2026 itself. वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर मेंस की पूरी तैयारी हो जाने के बावजूद भी they are not in a position to actually make much change as far as their PT performance is concerned. और PT examination ऐसे ही है जैसे कि उनकी मतलब आप कह सकते हैं क्या वो मूवी का डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, PT पे PT, PT पे PT देते चले जाते हैं. While they are very well prepared for their main examination from optional point of view. And then I suppose I would like you to, in that backdrop, bring PT Shala. In fact, यहाँ पे 2 चीजें अब बात करने वाला हूँ मैं. PT के एग्जाम में जो आप तैयारी करते हैं, when you're preparing for the PT examination, you are mostly preparing for collecting information and knowledge and information. That's what you're getting and gaining and controlling. And that's what you have got. But then I suppose we would like you to basically take you through 2 phases, because nature of the question is very important. Now I'm telling you a very delicate thing. You have to concentrate on this. You have one fact, and you, from book A or B or C, whichever book that you're reading, you just read one fact. And then that fact gives you enough information to express yourself depending on the question. But then if the question comes from a particular format in a particular setup, I find that a lot of people struggle. And then they find it difficult. So what I've done is that I've done a detailed research over several months, listing the type of questions that have been basically being asked in UPSC. I mean, I think we will expose you in detail later on. But for now, I can tell you, there have been questions coming which are a statement-based question. There are matching questions. There are chronology questions, time-wise question, the factual question, assertion, reasoning question, 1 true, 2 true, 3 true, and like that questions that they have been coming. So I think the various forms of questions have been coming. And then I suppose one need to actually equip oneself with the kind of format in which the questions are coming. Because आपने एक format में question पढ़ लिया, but if the question comes in a slightly different format, it is not easy for you to understand that. So एक reason तो ये है जो PT शाला में I'm going to take you through, that I would like you to identify for you कि अगर statement based question है तो आपके नहीं बनते हैं,
तो यू बेटर बी केयरफुल ऑफ दैट कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके ठीक हो जाए। असर्शन रीजनिंग के किसी के नहीं बनते हैं, किसी के मैचिंग नहीं बनते हैं, किसी के टाइम सीक्वेंस के नहीं बनते हैं, किसी के मैचिंग वाले नहीं बनते, whatever various forms that we have got, I've got a long list of them. So I'll make you aware that आपके ये वाले क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है, and if you know that, you practice on that and then you improve. The second is that we study very, very generic, and then in that generic study that we have got, we study polity, for example. बट पॉलिटी के पूरी किताब में से शायद अगर आपको ध्यान से देखो, द 10% ऑफ द बुक फ्रॉम वेयर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग, या और एटलीस्ट 80-20 पैरेटो वाली प्रिंसिपल को अप्लाई करो तो 20% से 80% क्वेश्चन आते हैं. बट देन you do not know those areas, and if you know those areas, you've not been tested in those areas. So what I would be basically trying to take you through is that we'll take you through those particular areas. Let's say constitutional bodies se questions aate hain, so I would like to take questions from that. Schedule se question aate hain, preamble se questions aate hain. I'll take you to those areas and try and see as to how you're performing. So one, which is very unique, probably for the first time in the country we're going to do, is that we will expose you your comfort level with respect to the nature of question. And second, I would like you to take you through with the micro area of a syllabus from where the questions are coming. Like, it's not that your geography is weak. Maybe your climatology is weak. Maybe climatology is weak only when the questions come on conceptual basis, not on factual basis. So I would like you to look into that aspect, and then we will combine both this format from this area. And that is giving you much clearer ideas that where is your pain point. And then once you know your own pain point, can be always corrected. And fourth, and the most vital, for which we are using some LMS big time in the second phase, the two phases that we have got. Mr. Mrinal and Mr. Saurabh will explain about the phases that we are taking you through in PT Shala. And in the fourth format that we have got, if I can quickly revise it, first, I'm going to take you to the nature of questions that are coming, matching questions, yeah, different format of questions. Second, I'm going to take you through the pockets of the syllabus from where the questions are coming. Third, I will marry both of them, like climatology questions, which are conceptual, climatology questions, factual. So you know that if the climatology questions factual is coming, I should be careful. And fourth, and the most vital of it, and that's where we have got lots of AI being used for it, is time series. Match all of them and time series. Like for example, नवंबर में आप ये गलती करते थे climatology के questions का, अगर वो conceptual होते थे, then you were making mistakes. Now how you are performing, now it is December, third week, how you're performing here. And that thing will be taken up at such level. So I would basically imagine that you are basically taken into those areas where you get to really understand how you are really placed in this whole setup in terms of your preparation. And then we will be doing, I suppose, the kind of analysis that you would have. I mean, I would call it as cognitive audit that we will have for you. You would find that if you show it to others, they will have FOMO about कि हम नहीं कर रहे, आपके पास ये knowledge है. And the smart students, and then the smart students have to be just told about it कि उनका pain point कहाँ है. And I consider you as smart people. You understand your, if you're told about the pain points, and then you would be able to definitely have it addressed in a more effective manner. In fact, I must tell you that पीटी में एक कर्स ऑफ कंपीटेंस है, इसको मैं कहता हूँ. कर्स ऑफ कंपीटेंस का मतलब ये हुआ कि आई मीन व्हेन यू प्रिपेयर फॉर मेन, you prepare for selection, and then when you prepare for PT, you prepare for not being rejected. Elimination nahi ho aapka, and that is what we basically expect to be having. And I think I would like you to ensure that when you go through this entire process, and then we are able to identify that pain points that we have got. And in fact, if you have got if you are told in time that here is your pain point, and in fact for that I'll be using this Dunning-Kruger inversion model, that I would like to shatter your
kind of competence. I mean, I think if you have a graph, Mr. Ankit, can you just place that graph, the slide that I had, I'm not able to put it there. The fifth one. So just wait a moment, sir. This yeah, this is what we have got, this Dunning-Kruger inversion I was talking about. I mean, you have got your confidence कि हमने कर रखा है, बन जाता है हमारा. But suddenly when we are exposing you, Mr. Mrinal is going to show you today, when you have your confidence shattered, शुरू में तोड़ेंगे आपका confidence, and then I suppose you would start having this endowment effect reversal. Endowment effect reversal, a concept है. Let me just explain that to you. Lots of time we consider कि जो मेरे अच्छे अच्छे सही सही क्वेश्चन वो मेरे हुए और जो नहीं हुए गलत हुए वो किसी और के थे. I mean, I would like you to endowment effect reversal के अंदर I would like you to own your mistakes, and then this endowment effect reversal के अंदर you will basically find that these are my mistakes which are committing, and these mistakes I can tell you that they are cognitive gold coins. These are the real secret about your success that you have got. And then the most valuable asset that you will find. You will find कि मेरी यहाँ पे गलती हुई थी, and then that गलती is basically is the cheat code for not committing mistakes in the future. And that is what we are going to tell you in detail later on as to how you start making good use of this endowment effect reversal, and then try and see and own up your mistakes and ensure that you do not commit those mistakes again. And then I would be through that Dunning-Kruger inversion, I would like you to shatter the illusion of preparation. And then I would like you to take you to a meta state of competition, and then basically tell you in time that all the blind spots of your preparation blind spots can be identified, and then you would be in a position to really know that, hey, mera ye alag hai, because I can't give you a simple common advice to everybody, because in PT Shala, I mean, I think the first set of sessions we would be having those, Mr. Mrinal is going to explain that is expose you to UPSC actual questions. And we have a scheme through which पहले week में polity, then economy. The first phase में we are just exposing you to the past questions. Then we are going to give you some material, very indicative material to read to just get your position as to how and where my pain points are there. I was talking to our team recently. I was telling that कि ये वाला ऐसा exercise है जो फर्स्ट फेज के एक्सरसाइज चलेंगे आपके साथ, जो कि दैट इज गोइंग टू गो ऑन टू 2 नवंबर तक चलेगा. द फर्स्ट फेज में जब वो इज बेसिकली गेटिंग यू ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ योर पेन पॉइंट्स. जैसे गॉड फॉरबिड इफ यू गो टू ए क्लिनिक, द डॉक्टर टेक्स योर वेट, doctor takes your vitals, and then these are like not very very detailed version, but then you will get an idea about where you stand. And for that Mr. Saurabh is going to explain to you. He'll give you some material, some current also, and then you will be basically getting an idea as to where I am there. And then reading those actual questions of the past years, that will help you to know about UPSC's trap anatomy, where UPSC tries to catch you and then on the wrong foot, and then they leave you some, what do you call, linguistic signatures. There are some linguistic signatures. I like you to do those questions, and wherever you make some mistakes, try and see that कि इसमें कौन से ऐसा indication था जो मुझे ले लेना चाहिए था. How could have been a possibility where I would have picked up this linguistic signature? I mean, in the classical old days, mostly they used to have only, always, but then there is still something that need to be acquired, and we'll be talking about it. Mr. Mrinal is going to take you through that and then talk about it also. However, the course that we are here in this at this moment, I suppose it is not a kind of session where I'll be actually
conducting classes and teaching those, you already have enough of that. Material also, you have a lot of it. We'll be giving some material and then some general material at the moment and then some specific material later. But then I suppose the real thing is that, I mean, we would train you, develop the skill to really understand the problem, and then I mean, your ringer at the right option is the, that is what is, what do you call that? Real flex bolte hain isko. So that's something which I basically expect that you should be able to, or iske liye, I mean, I think, I don't know, I really like this. Some of you may have read this book, Thinking Fast and Slow, wala Daniel Kahneman wala book hai. So I like you to see if a question which has gone wrong, did you think too fast or did you think too slow or overanalyzed? So, I mean, I think system 1, system 2 thinking, do all the experimentation with the previous year's question. You will get a lot of idea as to how you are actually moving in this. And then I think it is very important that you commit mistakes. I mean, I told you that our real gold standard that we have got is the cognitive gold coin is our mistakes. The committing mistakes is the real gold coin. And usko dhyan rakhna hai beta. And you have to also ensure that the two extreme, a lot of problems are happening. One is the questions that you go wrong, negative. So, I mean, I think what I call it as there's a lingo that you people use. I always try to learn from you people. Is that delulu? There's a word called delulu. Delusional stage में होने की वजह से दो extreme पे दिक्कत होती है. The delulu basically causes lots of deficit of marks. One is you go for a negative accumulation. Negative accumulation largely because you've heard about it, but they're not very certain, and then you still take chances and they go wrong. And the second that you leave certain questions. So that also is a kind of net loss that you have got. And then I suppose when we make you practice, I'm very conscious of the IKEA effect. I think some of you may be knowing it already. IKEA effect, I would like you to personally identify your own areas of problem, and through those areas of your own problem that you should have it corrected. अगर मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे problem है, correction अपने level पे ही करना होगा आपको, and I think that is very much possible. And basically अगर मैं इसको आपके लिंगो में बोलूँ, अगर पीटी के सिस्टम को हैक करना है, then अपनी vulnerability को पहचानने की जरूरत है. Am I taking too many chances? Am I I'm being too conservative? I'm leaving some questions. On these two extremes, if you're really able to really master yourself, risk लेना होगा. Risk avoidance नहीं हो सकता, risk management हो सकता है. And that's something which is what we would be basically telling you. In fact, in the second session, we would be going much into MVK approach, that is minimum viable knowledge that we have got. And then on the Pareto principle, we would identify that the 20% area that you concentrate, that gives you 80% of yield. And that is Pareto's optimality we would like to use mathematically also. And I think I am repeatedly saying that it is not at all a teaching session that you have got in PT Shala. It is making you aware how UPSC think, how you learn, how you make mistakes, and where you stand today, and how you can move from here further. These are all training that you'll get. And then, I mean, I suppose you would be also be conscious of making your, what I call it as error budget. You make your error budget bhi banayenge aap. Error budget say what I basically mean is that, I mean, you will write down every time and then identify that how you have got your counterintuitive journal में क्या entry करते हैं. This counterintuitive journal, as Mr. Saurabh was explaining to me, is one in which you would see as one set of listing in journal would be about the negatives. कि किस subject में मेरा negative ज़्यादा आता है. I mean, knowing your own self, which topic I'm getting more negative. Is it because of over analysis or under analysis? Or
what are the factors which may have contributed? What was going on in my mind when I basically committed the mistake? Negative ho gaya. The second thing which I expect that you should be looking into is that when you left some question, which are the subjects you are leaving? What is the topic in which you are leaving? And what is the mental state in which you are living? And if they were correct, अगर आपने इसको अगर ध्यान से, if you have carefully done those counterintuitive journaling करली, I can promise you in just a few weeks you will find 10 marks का difference आ गया. Because it works both ways, no? Like your negative कम हो गए and जो क्वेश्चन छोड़ते थे वो बनने लगे, उसमें से आप you start picking up. But then you have to write down, think about it, and then do this journaling, and then only you'll get to know. And 10 marks is a big differentiator that you have got. And in fact, I would not like you to do those syllabus hoarding. And then I think, I mean, you'll find that your friends will be preparing for those polity, economy, geography, and we will train you to solve the questions of polity, economy, and geography. I mean, that's where there's a difference lies. I mean, I think, I think you have FOMO का उल्टा क्या होता है? JOMO. You will have joy of missing out those formats. JOMO bolte hain? I think that's what FOMO, JOMO. Yeah, joy of missing out you will be having, and then you will be trained. And then, if I can quote one of our earlier students, he is, we take it through testing and testing through various types of questions, various sections of questions. Then you will have, what do you call in your lingo? I think I'm using a lot of your lingo. Drip check karte rahe. I mean, if you keep checking your drip, you would know as to where you stand. Anyway, coming back to this, I was trying to tell you about this the gentleman. Let me not name him. He is one person who is a Gujarat cadre IAS officer today. And then he used to tell me that, sir, मेरे को ना answer चमकता है. I suppose, how come answer chamakta hai? How can you get to that state? And then he told me that I've done so many questions, and from very early age that he started doing lots of questions, and he had done so many hundreds and thousands of questions that he has basically decrypted the psychology of the question setter. And in fact, he's also the same person who in the same year cracked the IIT Delhi and AIMS. Finally, he joined AIMS. Of course, he spent some time in IIT Delhi also and became IAS in the first attempt. And he had done so many of the multiple choice questions. I basically am interested that I'll take you through that. Instead of reading polity, economy, geography, I should expect that you should solve the polity, economy, geography, get questions solved well. And then that would definitely make you. And then there is something called as hyperbolic discounting. I would like you to mention. Hyperbolic discounting is something that, I mean, a lot of time you opt for a small gain and compromise or willing to compromise on the larger gain in due course of time. And that is what a lot of people have got. I mean, I think this is what we call it as meta of PT Shala. Most effective tactics available. Meta, most effective tactics available. In that meta that I'm trying to tell you is that start now, start in time, and then stop this thinking about कि जब time आएगा तो कर लेंगे. I suppose that's not going to happen. That will be too late, and that is this hyperbolic discounting has to be avoided. कि अभी आराम कर लेते हैं, छोटा सा जो आराम मिल गया, कुछ पढ़ लेते हैं, and then डोपामिन तो enjoy कर लेते हैं लर्निंग को, and रिवीजन नहीं करते, क्वेश्चन नहीं करते हैं, because इसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ मिलता नहीं है. I think it is very important that you, by doing question, you will break the silos of information, because you have Mr. Mrinal is going to explain to you that you will not read only polity and economy and geography. In one question, you have all of them. So you have to basically develop all this interlinking, and that is very, very important. So I would say that regularity in this is very, very important. And then for regularity, I mean, I think there's a very famous line: a strong chain is only as strong as its weakest link.
In a whole chain, if you have got a weak link, the whole thing breaks. So I would like you to attend this PT Shala, because we have a scheme, every class for which we have spent days and days collecting information for you and in a particular manner. And if you have one weak link, if you missed out one part of it, I suppose the whole chain is not is there. So I think kabhi bhi don't think that ke मेरे ख्याल में प्रिपरेशन का सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही होता है कि अभी दुल्ली दूर है, अभी चिल करते हैं. एंड आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच इज पीटी, अभी दूर है, अभी चिल करते हैं. दैट इज मत करो ऐसा. डोंट से दैट ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. अपने आप को धोखा मत दो. एंड आई थिंक आपको अगर एलीट पास चाहिए तो आई सपोज यू हैव टू स्लॉग. And this is the right time to start for PT preparation. I'm not asking that leave everything and get down into this. I think I'll tell you that if you start from now, I'll explain the concept of principle of marginal gain. Mathematics, basic mathematics, अगर आपने पढ़ रखा है, you all know that there are 239 days from today. शायद 239, 238 days जो भी हैं. I received one message today. 239 days है 24 of May 2026, 24th of May 2026. You have got 239 days. And then if you gain even 1% every day, it is not going to be 239% on that day. It will be 1000 plus 1068% more. That's the compounding effect that you have got. And then the principle of marginal gain, that will help you to compound your gain. And then every session you will be basically moving closer to your goal. And that is what I would like you to tell you. In fact, I would like to mention that you should not miss out on any session. 2 sessions you miss out, and I'm sorry to say, but I'm very, very particular. Please, I request all of you not to ask me for any special favor in this, but because I'm going to be very, very rigid about it. This course we have worked for you, where every single session is important. And then if somebody was missing out 2 of them, any 2 of them, the person is out of this group. And I think that is something which I would, of course, the person can join through some other route that you have got, getting registered again, and then can join in. But then I would like you to, for the first time, for this group that I'm talking about, in fact, I have got an amazing, overwhelming response, more than which we could have anticipated. So many hundreds of people are watching this. And then I like you to watch it regularly. Otherwise, there's something called as a very interesting concept in psychology, a Zeigarnik effect. You can read a little bit about Zeigarnik effect. If you leave something, your mind gets stuck into that, mind gets occupied. And then that is something which I don't want. In fact, I would like to basically tell you that please do attend all of them. Every session is important. And then I suppose we would do your error budget management, and then counterintuitive journaling that you'll be doing. And if you're doing regularly, you would be basically going into a situation which is tipping point of irreversibility. I just wanted one thing. You stick around for 6 weeks, and you'll get into tipping point of irreversibility. You would know that the system is working for you. You would know that the things are actually delivering for you. And then from that point onward, it's very natural and systematic. So I like you to, I'm very conscious of my responsibility that and the confidence that you've shown. And the whole team is extremely committed. And then we are getting something which is very unique, letting you know about the nature of question, which nobody does, and letting you know about the precise area from the questions are coming, and a combination of this over time series. You would actually have, over the period, your entire preparation will be oriented for the examination. And for you also, you would find that aapke bhi answer chamakne lagenge. And I think that's something which is what I basically want. In fact, I would like you to now invite Mr. Mrinal, and then he would take you through that. And then after Mr. Mrinal, I would expect Mr. Saurabh, Mr. Ankit to get back to you and explain different questions that they have got. And you'll get to really know that it is an amazing product that you have got. And I promise it will deliver. Just stick around and get to that tipping point, and I'm sure it start working for you. I'll get back to you in a while. Over to you, Mr. Mrinal. Thank you, sir.
This was a very insightful introduction to the program that you have begun. I'm glad to be a part of this overall product that you have brought for helping out aspirants. Just a brief background about me. मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही था, एक एस्पिरेंट ही था अबाउट 10 years ago. When I started my journey of UPSC preparation 2013-14 के आसपास, and then I came to KSG as a college going student in 2020 to 2015. 2015 में मैं आया था, and I joined the foundation course there. um, First attempt I reached the interview, second attempt I cracked the exam, and मेरा Indian Revenue Service में selection हुआ था. I got into customs and indirect taxes. Specifically, I worked in the GST department for the last 5 years. जब GST implement हुआ था, that was the time when I had begun my service, almost during that point of time, and I saw the entire transition from service tax to GST that the Indian government had undertaken. And it was a beautiful experience to be a part of that. Then I did a lot of roles in GST, but then somehow my career aspirations also changed as I went ahead in my career. I went to UK to do an MBA in finance from Imperial College London, and that is how I took the decision to resign from Indian Revenue Service and do something in global finance in UK in London. But in the meanwhile, I got in touch with Sir. I told him, I updated him about my decision to resign from the service and continue here. So he requested me, or he was kind of telling me about this program that he was bringing on, and he asked me if I could be a part of it. And definitely UPSC has been such an integral part of my life कि कभी भी prelims या means अभी भी जो exams होते हैं I keep on following those. I keep on understanding or reading or analyzing that what would have I written had I been taking this examination as at this point of my time. मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी एग्ज़ाम और टफ हो गया एज़ कम्पेयर टू वॉट आई वॉज एक्सपोज टू. Things have gotten tougher with each passing year, and the level of preparation that you people have to do, and the level of competition also has gone up. So I salute you people for perseverance and for the efforts that you people are taking to struggle and to do justice to your preparation for this examination. Now, let me tell you that what am I going to do in this overall journey that you people have till your prelims. I would be an integral part of this program. I would share about my own experiences and how I had prepared about prelims. Particularly the year when I got selected, I was one of the highest marks getter in the 2017 prelims examination. So I remember vividly that the cutoff was 105, 105 के cutoff था, and मेरा exam में जो number है that was around 140. So I had 35 marks of leeway, and my friends were quite jealous कि भाई थोड़े से marks इधर उधर भी बांट दो, दो चार लोग और पास हो जाएंगे. But to be very honest, when I left the examination hall, I wasn't sure whether I'll be clearing the prelims examination or not. उससे जस्ट 10 दिन 15 दिन पहले ही मेंस का बल्कि पिछले यूपीएससी 2016 का रिजल्ट आया था विच आई वाज होपफुल ऑफ क्लियरिंग, बट आई कुड नॉट गेट वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू एंड आई कुड नॉट मेक इट टू द रैंक लिस्ट. एंड जस्ट 18 days after that or 15 days after that we had the prelims. So पढ़ने का भी लॉजिकली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था एंड इमोशनल ट्रॉमा भी बहुत था. But ultimately the score went out, seemed to be good. Even in the first attempts and the other attempts also, my prelim scores were good. I could clear the mains every time I sat for the mains examination. So I would keep on discussing all the insights that I had developed, which I feel are still relevant. I will add up the new nuances or the new techniques that I think you people should know. And then I would do my best to be personally available for you people. जब भी आपको कोई doubt हो, you can mail me, you can message me, we can interact. Maybe I would not be replying एकदम upfront, but do remember that I promise that I would definitely reply and get back to your questions, because all the questions that you people would be having, I would have gone through those, and I would be in a position, I think, wherein I'll be able to help you out. If not, there's a team at KSG who will help you out, or I have my friends, my batchmates who are doing good in the services, and I can clear doubts if it is from some optional which I am not aware of, then I can get hold of these people and then get in touch with you. So what is the motive of my interaction with you today is particularly to expose you to the previous year's questions that we have got, particularly for polity. And I would be starting with 2025
प्रीलिम्स वाले जो सवाल आए हैं पॉलिटी के, just to expose you to the various facets of the questions that you need to be aware of. आपको क्या पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे strategize करना है, because see, prelims जो है, it is not a test totally about your knowledge definitely is a part of it, but it is basically कि आपको it is a test of or the stage of exclusion. जब there are 4 or 5 lakh people who are giving the examination and only 12-13,000 people clear it, you can say that the odds of clearing it are very less, because मोस्टली क्या होगा ना, अगर आप सोचो इंडिया में 5 लाख बच्चा जो एग्जाम दे रहा है, उसमें से 1 लाख बच्चा तो अच्छे से तैयारी करके देगा, एंड उस 1 लाख बच्चे में से सिर्फ 12-13 हज़ार बच्चे सिलेक्ट होंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की नॉलेज कम है. आई हैव सीन मेनी पीपल हु आर मच मच मोर knowledgeable than the people who are getting selected, but then some things are not clicking, and there are friends of mine जिन्होंने एक बार प्री क्लियर किया 5-6 अटेम्प्ट्स में, एंड उसी बार रैंक भी आ गई. So I know that for many people, prelims is the biggest barrier. I personally consider it to be the biggest hurdle in clearing this examination, क्योंकि because purely out of probability. Your probability to get out at this stage is much much more than your probability of getting selected in other stages, right? So mains has a lot less competition ratio, and personally I feel कि mains is the most surest stage जहाँ पे आपकी अगर तैयारी अच्छी है आप क्लियर कर पाओगे उस चीज़ को. बट अगेन इंटरव्यू इज अगेन डाइसी, बट लेट अस फोकस ऑन प्रीलिम्स टुडे जब हम पीटी शाला की बात कर रहे हैं. सो let me show you the first slide that I have here. I say that PYQs are the code book for PT. अगर आप PYQs करते हैं, then basically you have a sense check or you have a knowledge of क्या पूछ रही है UPSC. And if we just think कि यार जो पूछ लिया गया है वो तो दोबारा नहीं पूछा जाएगा, so I can clear that doubt upfront that ऐसा नहीं होता है. There are many questions which are repeated, and if the questions are not repeated verbatim, क्वेश्चंस का जो थीम है, जो एरियाज है, जो लिंगो है, वो सारी चीज़ें कई बार रिपीट होती है. सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट सम ऑफ दोज थिंग्स फ्रॉम द 2025 पेपर. सो पॉलिटी से अराउंड 12-13 सवाल आए थे, विच आई बिलीव weren't that difficult. I have taken around 10-11 questions for your discussion. So if we move to the next slide, see, सबसे पहले आपको क्या समझना है ना कि क्वेश्चंस में कई बार आपको समझना पड़ेगा दैट वेदर इट रिक्वायर्स ओनली सरफेस लेवल नॉलेज या इट रिक्वायर्स सम कॉग्निटिव एनालिसिस, राइट? तो कभी कभी सिर्फ सरफेस नॉलेज से भी आपका काम चल जाएगा. इट इज समटाइम्स इट इज वेरी फैक्चुअल थिंग दैट हैज बीन आस्क्ड टू यू, बट ऑलवेज रिमेंबर कि अगर यूपीएससी बहुत सिंपल पूछ रहा है देन फाइन, जस्ट टेक एंड मूव अहेड, बट स्टिल गिव अ माइक्रो सेकेंड ऑफ थॉट टू यू, टू योर माइंड कि कहीं इसमें कुछ ट्रैप तो नहीं है, कोई झोल तो नहीं है. Like this question, which you see on your screen is a 2025 polity question. This looks very simple to your eyes. इसमें ये पूछा जा रहा है कि which of these statements are correct, जिसमें सबसे पहले if any question arises as to whether a member of the House of the People means Lok Sabha has become subject to disqualification under the 10th schedule, the president's decision in accordance. इसमें क्या हो गया, एकदम से प्रेसिडेंट्स डिसीजन डाल दिया, जबकि इसमें होना चाहिए था कि स्पीकर के डिसीजन से, एवरीवन नोज कि स्पीकर के डिसीजन से डिस्क्वालिफिकेशन होता है. तो ये स्टेटमेंट अपफ्रंट गलत होगी, वरना आप फ्लो में पढ़ते रहोगे और प्रेसिडेंट इतने लोगों को डिसमिस कर सकते हैं, बिकॉज लाइक सिविल सर्वेंट्स, एवरी मेजर फिगर्स, एवरीवन इज डिसमिस्ड एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. सो हो सकता है कि एकदम वो ट्रेन ऑफ थॉट में आप प्रेसिडेंट उसको टिक कर दो, बट दैट इज द रॉन्ग थिंग. ये कैच आपको पकड़ना है. दिस वुड रिक्वायर सम कॉग्निटिव लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. And in the next line itself, it says there are no mention of the word political party in the Constitution of India. अब Constitution of India पढ़ने के लिए आपको बेयर एक्ट वाला चीज पढ़ना चाहिए. That is my sincere advice. And if it is a statement like this, that there is no mention of the word political party in the Constitution of India, you have to think कि कहाँ पे हो सकता है. And the first thing that you should think of is the 10th schedule that is mentioned in the statement 1 itself, right? एंड 10th शेड्यूल में पॉलिटिकल पार्टी पर्टिकुलरली मेंशन है बिकॉज उसमें बताया जाता है कि अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी जिससे आप इलेक्ट हुए थे उसको आप छोड़ के जाते हो तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स लागू हो सकते हैं, राइट? सो बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. आपको मेजरली ये पढ़ के स्टेटमेंट 2 भी पढ़ के कई बार लग सकता है कि हाँ ये शायद स्टेटमेंट सही हो, बट हल्का सा आप अपने सरफेस लेवल से थोड़ा सा नीचे लेवल पे जाएंगे एंड आप 10th शेड्यूल को ही रिकॉल करेंगे, रिकलेक्ट करेंगे, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी. I would also appreciate if you people keep on writing or guessing or acknowledging the answers in the chat. आप लिख सकते हैं. I'll also be telling you alongside what are the
correct answer. The objective right now is to understand the need of the questions and the need of our preparation, right? If we see the next question, we need to be very sure about the zones of the questions that are being asked. Zones से मेरा क्या मतलब है that there are few areas which are being repetitively asked. Like हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, कई लोग डीडी वासु पढ़ेंगे, कई लोग अपनी कोचिंग के नोट्स पढ़ेंगे, but you see that every topic is not of equal weightage when we talk about prelims, because there are few topics like governor, speaker, MP, MLAs, anything related to um, repatriation, anything related to resignations. All these things are asked a lot by UPSC. Like what you see on your screen right now is a question related to speaker, जिसमें पहले स्टेटमेंट में अगर मैं जल्दी से आपको बताऊँ तो ये बोला गया है कि स्पीकर हैज शैल नॉट वेकेट हिज और हर ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल आफ्टर डिसोल्यूशन. सेकेंड स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. पर्टिकुलरली देखिए इसमें कई बार पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपका जो दायरा है ऑफ एनालिसिस इज लिमिटेड ओनली टू द कॉन्स्टिट्यूशन. If it is written as such in the constitution, you have to analyze that statement according to that. अगर इसमें कोई आपको pretext नहीं दिया है, कोई context नहीं दिया है, then you can think of even some court judgments or you can think of some other areas जहाँ से ये statement ठीक या गलत साबित हो सकती है. So the second statement is, according to provision of constitution, a member of the House of People on being elected as speaker shall resign from his or her political party immediately. ये सब बहुत ही स्वीपिंग सेंटेंसेस होते हैं, ये सब कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ है. इफ यू जस्ट सी द आर्टिकल्स, इसमें आर्टिकल 94 होता है जो स्पीकर से रिलेटेड होता है. सो सेकंड स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग. एंड जहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करनी है, यू कैन जस्ट एलिमिनेट क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 फ्रॉम दिस. तो आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका ऑटोमेटिकली, इवन ऑप्शन ए भी आपका एलिमिनेट हो जाता है, एंड यू गेट ओनली ऑप्शन सी विच इज 1 and 3 which are actually the correct answers. So आप हमेशा ऑप्शंस भी देखते रहिए, because it would save your time. Even without reading the question, the statement 3, I can take the correct answer as C, because I know for sure that statement number 2 is wrong, and this is how you save some microseconds. I would always advise to read the third statement as well, but then you can just put a cursory थिंग ओवर इट कि अगर स्पीकर के रिमूवल की बात हो रही है तो कुछ 14 डेज के नोटिस की बात हो रही है, विच इज करेक्ट. सो द आंसर फॉर दिस वुड बी सी 1 and 3 ओनली, राइट. सो जोन, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज अगेन रिलेटेड टू जोन. इसमें आप देखिए गवर्नर, तो गवर्नर के बारे में सवाल पूछा गया है, एंड every year by year they ask about speaker, governor, MPs, MLAs, panchayats, urban local bodies. So these are few favorite topics of UPSC, एंड आपको इन पे ज़्यादा ध्यान देना है. यू हैव टू रिवाइज दीज टॉपिक्स. आई वुड से, आई एम नॉट जोकिंग, बट आपको 40 बार 50 बार ये टॉपिक्स रिवाइज करने होंगे, ताकि जब प्रीलिम्स में जब सवाल आए ना, यू डू इट जस्ट in few seconds. Like if you see this statement, this question regarding governor, इसमें भी पूछा गया which of these are correct. So governor of a state is not answerable to any court. Yes, it is mentioned in article 361, which is relating to this particular aspect. Second statement which says no criminal proceedings can be instituted against governor. Again, this is a correct statement. ये आपको logically भी पता है कि ये सब चीज़ें are the privileges that a governor has, and these are also there in our constitution. And then the members of state legislature, the third statement, are not liable to any proceedings in for what they do or what they say in the house. This is again correct. So I'm just telling you, इस एक सवाल में गवर्नर भी आ गया, MPs भी आ गए, प्रोसीडिंग्स भी आ गया, and all the three statements are correct, making the answer as D. So zone को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, उसी से आप प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे. वी कैन डेफिनेटली प्रिडिक्ट फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स एज वेल. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, यूपीएससी के जो सर बता रहे थे ना कि फॉर्म्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं क्वेश्चंस के, तो लिंग्विस्टिक सिग्नेचर्स क्या है यूपीएससी के, कैसे कैसे सवाल के लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको अवेक रहना पड़ेगा कि यार सही भी पूछ सकते हैं, गलत भी पूछ सकते हैं, मिक्स्ड भी पूछ सकते हैं, मैचिंग भी पूछ सकते हैं. सो लाइक इफ यू सी दिस क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन कि इनमें से कौन से करेक्ट है जो अभी तक हम सारे सवाल देखते आए हैं. नाउ दिस इज समथिंग रिलेटेड टू लोकपाल. अब just try to analyze it, even if you do not know this particularly well, theoretically well. आप इसको सोचिए that the statement 1 which is given there is that the power of Lokpal applies to public servants of India but not to the Indian public servants posted outside India. Now थोड़ा सा भी अगर आप एक सेकंड के लिए भी रुकेंगे, आपको लगेगा कि is it a
Is it a knowledgeable or justifiable differentiation factor कि अगर आप इंडिया में पोस्टेड है बीइंग अ सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट देन आप लोकपाल के दायरे के अंडर आते हैं, बट जैसी आपकी फॉरेन पोस्टिंग होती है, मान लेते हैं आईएफएस ऑफिसर है, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर जो है, वो अगर यूके में पोस्टेड है, वो अगर यूएस में पोस्टेड है, वॉट एवर दैट ऑफिसर डज विल ही बी आउटसाइड द परमिट और परव्यू ऑफ लोकपाल? डेफिनेटली नॉट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपेरेंटली एकदम गलत हो जाती है। अगर आपको ये अगर आपने कहीं ये पढ़ा भी नहीं है, स्टिल यू कैन जस्ट किक इट ऑफ। सेकेंड स्टेटमेंट, द चेयरमैन और मेंबर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा कहीं पे भी लोकपाल के उसमें नहीं है। एंड देन वाई शुड इट बी, आप लॉजिकली अगर आप सोचिए कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो क्या आप लोकपाल के चेयरपर्सन या मेंबर भी नहीं बन सकते? आपने इतना साल पब्लिक सर्विस करी है, यू नो what are the pitfalls, you know what are the problems with which MPs and MLAs and the public servants are dealing. So why would the law be drafted in such a manner कि अगर आप MP MLA रह चुके हो तो आपको member of or chairperson of लोकपाल नहीं बनाया जाएगा? So again this is something which is totally wrong. Third statement is the chairperson or a member shall not be a person of less than 45 years of age on the date of assuming office. Maybe आपको ये पता हो नहीं पता हो, बट दिस इज करेक्ट थियोरेटिकली। बट अगर आपको फोर्थ स्टेटमेंट भी पता है दैट लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट अ सिटिंग पीएम, now this is something which has been covered in the news a lot, that even the PM is not beyond the lokpal's jurisdiction, ठीक है? तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। आपके पास ऑप्शन ही 3 बचता है। अगर 3 आपको थियोरेटिकली नहीं भी पता था, स्टिल यू नो कि हाँ 3 ए या डी में से सवाल कोई ना कोई ऑप्शन आपका सही होगा। एंड अगर हल्का से भी आपको 45 वाला आपको चीज़ याद है, देन यू कैन जस्ट से कि थर्ड स्टेटमेंट इज राइट एंड द ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट? सो अंडरस्टैंड द लिंग्विस्टिक सिग्नेचर। यहाँ जैसे करेक्ट वाला पूछा है, आई विल शो व्हाट आर द अदर लिंग्विस्टिक सिग्नेचर्स। इफ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सी यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्टली मैच्ड। अगेन करेक्ट वाला ही पूछा है, बट करेक्टली मैच्ड, दिस इज अनदर फॉर्मेट फॉर द पीपल हु haven't been exposed to the formats of prelims. See, statement 1 है separation of judiciary from the executive in public services. Is it stated under the DPSPs? It is. अगर आप देखेंगे आर्टिकल 51 में आता है ये शायद। Then valuing and preserving of the rich heritage of our composite culture, is it a part of the fundamental duties? Definitely it is. 51A में fundamental duty में डाला गया है कि हमारा ये दायित्व है कि हम लोग वैल्यू करेंगे अपने रिच हेरिटेज को। एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन below the age of 14 years in factories, is it under the fundamental rights? Definitely it is under article 24. So ये तीनों statements आपकी सही हो जाती है। And how many of these are correctly matched? All the 3 are correctly matched. So this is another type of question of the linguistic signature of UPSC, जहाँ पे वो matching, crossing ये सब पूछेंगे आपसे। This is I think on a simpler part, but you have to give it a thought कि क्या कभी-कभी ये लोग क्या करेंगे, इंटरमिक्स कर देंगे। तो वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग वाले को डीपीएसपी में डाल देंगे, जो आपको लगेगा पढ़ के ठीक है, बट आप ये जरूर सोचिएगा कि डीपीएसपी जो है वो स्टेट के लिए ऑब्जेक्टिव्स है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स है, जो ड्यूटीज है पर्टिकुलरली, वो इंडिविजुअल्स के लिए, सिटीजन्स के लिए ऑफ द कंट्री, उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस। दिस इज वेरी कॉमन फ्रॉम पार्ट ऑफ यूपीएससी की एक ही जो 2 एस्पेक्ट पूछे गए हैं उनको इंटरमिक्स करके पूछ लिया गया। सो दीज आर द ट्रैप्स दैट यू नीड टू अवॉइड, राइट? If we see the next question, another signature, linguistic signature of UPSC. I'm just waiting for the next question. Yeah. इसमें अब देखिए एकदम से इन्होंने पूछ लिया which of the statements given above are not correct. Now I can give it to you in writing कि ये कई सारे बच्चों ने इस बार जो सवाल अटेम्प्ट किया होगा, कई ने सिर्फ करेक्ट वालों को टिक कर दिया होगा, नॉट करेक्ट वालों को वो टिक करना भूल गए होंगे, उनसे गलती हो गई होगी, बिकॉज ये उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि यार एकदम से नॉट करेक्ट पूछ लिया। बिकॉज 90% ऑफ द क्वेश्चन आर विच ऑफ दीज आर करेक्ट, एंड बीच में एकदम से नॉट नॉट आ जाएगा। तो आप देखेंगे भी इसमें इन्होंने नॉट को बोल्ड भी करा हुआ है, ठीक है? सो इट इज टू अट्रैक्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस फैक्ट दैट यू हैव टू पुट विच ऑफ दीज आर नॉट करेक्ट। एंड अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें तीनों ही स्टेटमेंट्स एकदम अजीब सी दी हुई है, जैसे पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेटमेंट इन ऑल स्टेट्स, बट अगेन इसमें वी नो दैट देयर इज अ लिमिट, पॉपुलेशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि जो सेकेंडरी स्टेज है वो किसी स्टेट में होगा कि नहीं होगा, किसी डिस्ट्रिक्ट में होगा कि नहीं होगा। देन
to be eligible to be a member of panchayat, a person should attain the age of 30 years. Now हर जगह जब एज 21 years है पॉलिटिकल इस चीज़ के लिए, तो why should पंचायत be having an age limit of 30 years? Again, this is factually wrong. Third is CM of a state constitutes a commission to review. अब फाइनेंस कमीशन की जब बात आती है सेंट्रल की, तो उसको प्रेसिडेंट बनाते हैं. तो जब जब हम स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे, तो भाई उसमें चीफ मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से आ गया? देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दिस. It is the governor who constitutes this commission. So all the three statements are wrong, and if you correctly see that आपसे not correct पूछा गया है, then you will tick D. Otherwise आप उलझ के रह जाएंगे कि यार ये तो सारे स्टेटमेंट गलत लग रहे हैं, बट none of the above तो कहीं है ही नहीं, राइट? सो बी वेरी केयरफुल. अगर आपने इसको करेक्टली भी सोचा है कि करेक्ट हमको टिक करने हैं, एंड इफ यू नो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, देन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है नन ऑफ दी अबव कि नन ऑफ दी अबव आर करेक्ट, तो आप फिर से सोचिए कि आप क्वेश्चन में कुछ मिस कर रहे हैं, राइट? एंड वंस यू सी द नॉट, देन डेफिनेटली यू विल टिक आंसर डी, एंड दिस वुड बी अ सिंपल थिंग. Many people would have definitely put something wrong despite knowing this question correctly, right? So be very aware of this linguistic signature of UPSC. If we see the next question, what can we guess? Now guess देखो हमेशा तो नहीं होगा, और आप 100 चीज़ें सोचेंगे उसमें से शायद 2 चीज़ें आएंगी, बट टेक माई वर्ड, इवन इफ यू आर एबल टू गेस 2 questions, the amount of satisfaction it will give you in the examination hall is immense. आपको इतना अच्छा लगता है कि यार ये आ गया, मुझे आता है, एंड आई कैन क्विकली डू दिस. सो लाइक दिस क्वेश्चन, जो गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में एक बहुत टसल चल रहा था, तमिलनाडु में ये चीज़ बहुत बार बार रिपीट हो रही थी, इवन न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था कि कैसे गवर्नर इज रिजर्विंग द बिल्स पास बाय स्टेट फॉर प्रेसिडेंशियल रिव्यूज एंड ऑल. उसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी, एंड इट वॉज अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस. नाउ इसमें सीधा सीधा इन लोगों ने सवाल पूछ लिया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया explicitly mentions that in certain spheres the governor of a state acts in his own her discretion. So definitely this is a correct statement, because गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन होती है, एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लियरली मेंशन्ड है. बट द सेकंड स्टेटमेंट सेज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज ओन रिजर्व अ बिल पास बाय स्टेट फॉर हिज कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर. बट ऐसा तो कोई प्रोविजन ही नहीं है. मतलब पूरी कंट्रोवर्सी ही इसलिए थी कि स्टेट गवर्नर ने उसको रिजर्व कर दिया फॉर प्रेसिडेंशियल रिव्यू एंड ऑल, बट प्रेसिडेंट क्या डायरेक्टली कर सकते हैं? कभी ऐसा कोई प्रोविजन हुआ ही नहीं है. सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो इफ यू वुड हैव जस्ट थॉट अबाउट दिस, जब ये कंट्रोवर्सी आपने न्यूज़ में पढ़ी होगी, करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, एंड यू वुड हैव थॉट कि इसके और क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, ट्राई क्रिएटिंग सिनेरियोज कि अच्छा यहाँ पे गवर्नर ने रिजर्व कर दिया, क्या प्रेसिडेंट ऐसा कुछ कर सकते थे? क्या चीफ मिनिस्टर बोल सकता है इनको? क्या कोई एमपी एमएलए बोल सकते हैं इनको, गवर्नर को ये करने को? या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल सकती है? तो क्रिएट सिनेरियोज, बिल्ड क्वेश्चंस इन योर माइंड, एंड ट्राई टू थिंक कि अगर ये एस्पेक्ट के ऊपर सवाल पूछना हो तो ट्रिक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, राइट? सो that is a very important and very helpful trick that I used during my preparation, and whenever any question came from that, I was totally happy, and it gave me an immense sense of happiness and push that सब कुछ ठीक चल रहा है, right? So moving on to the next question very quickly. Now एक चीज मैं सोचता हूँ, सेफ्टी जोन्स, या फिर मैं जिनको बोलता हूँ स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, कि आप कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो या उनको गलत मान के बढ़ सकते हो. ठीक है, हमेशा ये चीज़ काम नहीं करती, बट इफ़ यू हैव रेड द थिंग्स एंड यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग इंट्यूशंस, देन आप जैसे ये जो सवाल आप देख रहे हो कि विद रिस्पेक्ट टू 5th शेड्यूल एरियाज, जहाँ पे जो भी ट्राइबल एरियाज वगैरह की बात होती है, ठीक है, they say that the state government loses its executive power in such areas and a local body assumes total administration. तो आपका इस स्टेटमेंट का कहना है कि एक स्टेट है जिसमें 5th शेड्यूल का एक एरिया है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की कोई पावर ही नहीं रहेगी, एकदम पावर नहीं रहेगी, loses its executive power in such areas, which cannot be true in any regard. So statement 1 is definitely wrong. The second statement, union government can take over the total administration of such areas under certain circumstances on the recommendations of the governor. ये इन लोगों ने पता क्या करा है, जो स्टेट में जो इमरजेंसी लगती है उससे थोड़ा सा ओवरलैप कर दिया है, एंड ये स्टेटमेंट बना दी है. पढ़ के आप लोगों को लग सकता है, बट देन अगेन, have you ever seen a union government, the central government taking over a 5th schedule area on recommendation of a governor? So again, this becomes totally wrong, and again इसमें पूछा गया कि correct कौन से है, so your option would be D, because these both are very controversial statements and these can never be right, Moving on to the next question. I have 3 more questions to discuss with you people.
सो जो नेक्स्ट में जो मैं बात करने वाला हूँ वो है इंटरलिंकिंग के बारे में। नाउ इंटरलिंकिंग कई बार सब्जेक्ट्स के बीच में होती है, कई बार टॉपिक्स के बीच में होती है, कई बार मेंस में GS1 GS2 3 4 के बीच में होती है। बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा सवाल है विच इज डेफिनेटली बिलोंगिंग टू द डिपार्टमेंट दैट आई हैव सर्व्ड इन, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आई मीन इसमें आप देखेंगे देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव बीन मेंशन्ड, एंड जब ये सवाल पिछली बार पेपर में आया था, सो ऑल माय बैचमेट्स एंड वी वर वेरी हैप्पी कि यार हमारे सर्विस के बारे में पूछा जा रहा है। Like the organization that you see on the first column, Directorate of Enforcement, ED, ये हमेशा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछले 3-4 साल में, राइट। एंड इसमें इन्होंने उसके जो फंक्शंस बताए हैं और किस डोमेन में ये काम करती है, किस डिपार्टमेंट के अंडर ये काम करती है। नाउ इन द फर्स्ट रो इटसेल्फ दे हैव मेड अ वेरी इंटेलिजेंट इंटरमिक्स। उन्होंने क्या करा है, होम अफेयर्स के अंडर डाल दिया है ईडी को। और आपको पढ़ के सही लगेगा कि यार हाँ, इतना सारा लॉ एंड ऑर्डर का इशू चलता रहता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ ईडी होता होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। बट ईडी का रोल क्या है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को पकड़ना है। तो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स में होम अफेयर्स का काम क्या होगा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू का काम होगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स की बात आ रही है। तो वहाँ पे जो पहला रो है वो गलत हो जाता है। सेकेंड रो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस डायरेक्टरेट्स दैट वी हैव इन इंडिया, जो पूरा कस्टम्स का जितना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें कोई फ्रॉड्स ना हो उसके लिए डीआरआई को एस्टैब्लिश किया गया था, राइट। एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दैट वी हैव, people only who are full of integrity and full of capability are part of DRI. So if you join the Indian Revenue Service ever and you get to be a part of DRI, it would be the best few years of your life for your learning, because immense exposure मिलता है यहाँ पे। And वहाँ पे पूछा गया है कि it is it falling under Department of Revenue, Ministry of Finance? So definitely, because customs कौन हैंडल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, ठीक है। यहाँ पे ये लोग इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से भी थोड़ा कंफ्यूज कर सकते थे, बट इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ही रखा है। देखो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ही होगा जो सारे टैक्सेस, कस्टम्स, इन सबको कलेक्ट करेगा। सो रो नंबर 2 इज फाइन, एंड रो नंबर 3 इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट। सो ये काफ़ी कम लोगों को पता होगा। वी हैव पीपल हु हैव वर्कड हेयर इन दिस डायरेक्टरेट, बिकॉज ये क्या है, यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स के टूल्स को यूज किया जाता है, एंड बाय यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड एआई एंड बिग लर्निंग, बिग मशीन लर्निंग, व्हाट वी डू इज दैट वी ट्राई टू क्रिएट एनालिसिस की कौन कौन ऑफेंडर्स हो सकते हैं, कौन कौन रिपीटेड ऑफेंडर्स है टैक्स इवेजन के, और किसके प्रोफाइल में कुछ कुछ गड़बड़ी दिख रही है। सो बेस्ड अपॉन दैट we do a lot of enforcement activities as well as a lot of policy orientations, right? So this also falls under Department of Revenue, Ministry of Finance, which was not known by a lot of people, but इसमें 2 and 3 are correctly matched, 1 is wrong, so therefore इसका जो आंसर हो जाएगा B हो जाएगा, which is only 2. Now the last slide that I have from my side is कंटेंट और स्किल का मैट्रिक्स आपको एक समझना पड़ेगा, राइट। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, जब भी हमारे सवाल गलत होते हैं ना, शुरू में सवाल बहुत गलत होंगे, नेगेटिव्स होंगे, पर कोई बात नहीं। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू एनालाइज कि ये सवाल गलत क्यों हो रहे हैं। इज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंटेंट या इज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स, ठीक है। स्किल में क्या आता है कि आपका अवेयरनेस थोड़ा मिस हो गया, आपका जो जो एटीट्यूड था क्वेश्चन को करते हुए वो गलत हो गया, समथिंग लाइक दैट। बट कंटेंट में क्या आता है कि यार लक्ष्मीकांत रिवाइज ही नहीं हुई, पढ़ तो ली बट रिवाइज नहीं हुई, नोट्स रिवाइज नहीं हुए। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, जो आपके नंबर ऑफ रिविजन्स होने हैं ना, वो 20-30 टाइम आपको रिवाइज करना पड़ेगा बिफोर यू गिव योर एक्चुअल प्रीलिम्स एंड अक्रॉस द ईयर। आपको इतना बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आप प्री में बहुत श्योर हो, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर जो आपके लेफ्ट साइड पे है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, कि इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और जोनल काउंसिल्स, इनमें से कितने ऐसे संस्थान हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनाए गए हैं। अब इसमें कंटेंट और स्किल दोनों का एक मिक्सचर है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल सारे पता होने चाहिए, तभी आप बता सकेंगे कि हाँ इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो शायद आर्टिकल 262 के अंडर आता है, एंड वो तो डेफिनेटली आर्टिकल्स में है कॉन्स्टिट्यूशन के। बट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और जोनल काउंसिल्स ये कहाँ से आ गए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तो एक लेजिस्लेशन के तहत बनाया गया था, और जोनल काउंसिल्स भी जो है वो भी शायद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर बनाया गया था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं बने हैं। तो यहाँ पे अगर आपको स्किल और कंटेंट के एक वो देखना पड़ेगा कि अगर ये सवाल आपका गलत हुआ है तो क्या आपने ये चीज़ को
आपने इग्नोर कर दिया कि जोनल काउंसिल्स तो कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, वो तो स्टेट के वो तो एक सेंट्रल एक्ट से बने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत समझनी पड़ेगी। द मेन पार्ट दैट यू डू फॉर 1 year इज नॉट गिविंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, वो तो करने ही हैं आपको, मोर एंड मोर टेस्ट आपको देने ही हैं, बट उसका एनालिसिस इज आई थिंक इवन मोर इम्पॉर्टेंट, because the people who do analysis properly are the ones who have higher chances of clearing this exam, because वो अपने accuracy ratio को बढ़ाते हैं, right? Then again, I would say the question that you have on the right side, that with reference to the Indian polity, consider the following statements. An ordinance can amend any central act. Okay, looks right. And an ordinance can abridge a fundamental right. Now what nonsense, ये तो हम सबको पता है। अगर हम में से किसी ने इसको ओके कर दिया, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम कि हमने कहीं ना कहीं हमारा फोकस लैक हुआ है। देखो इसमें इसमें कंटेंट की कमी हो ही नहीं सकती है। एवरीवन नोज an ordinance cannot abridge a fundamental right. And once you eliminate this statement number 2, you are left only with option number C, because बाकी हर ऑप्शन में statement number 2 दिया हुआ है। So I'm just focusing your attention on these facts कि आप यूपीएससी के जोन्स को समझिए, आप यूपीएससी के लिंग्विस्टिक्स जो इसकी है उसको समझिए, हॉट टॉपिक्स क्या है, करंट से रिलेट कैसे करना है, वो सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपको एनालिसिस बहुत ज़्यादा करना है। सो ये तो 25 के PYQ से मोस्टली जो मैंने आपसे डिस्कस करे। पीटी शाला में खान सर ने ऑलरेडी सारी ये जो वीडियोस है, जो PYQs है स्पेसिफिकली पॉलिटी के, उस पर सर ने कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करा हुआ है। एंड आई वुड शेयर द लिंक फॉर दिस वीडियो, जहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने को मिल जाएंगे विद ऑल द डिस्कशंस, जिसमें सर ने पर्सनली इसमें सब कुछ डिस्कस करा हुआ है। सो I went through this resource and I found it very, very helpful, because once you go through it, you are done with prelims PYQs of polity. And I have come to know from sir कि he would be providing for all the topics, all the subjects, such videos, and I would be basically doing the 25 PYQs, 2025 के PYQs, and I'll also be taking some kind of sessions with you people, so that I kind of train you about the nuances of prelims. ट्रेन में कितना कर पाऊंगा या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट देन आई वुड डेफिनेटली बी अ पर्सनली अवेलेबल टू यू पीपल, ताकि हम लोग डिस्कस कर सके, जस्ट कैंडिड डिस्कशंस ऑन कॉल कि ये सही लग रहा है, वो गलत हो रहा है। आई हैव बीन थ्रू दिस जर्नी मेनी टाइम्स, आई नो द पेरिल्स, आई नो the hard work that everyone puts in, and I will be there for you people to have such discussions. आपको जो भी academic discussions है उसके लिए सौरभ sir would be definitely be there. He is one of the brightest academic mentors that we have got at KSG. He has been doing a lot of service for the students. Abhi recently he had taken care of the KSG's PSTP program, जो मेंस का पूरा राइटिंग प्रोग्राम था। अभी भी जो मेंस के राइटिंग के सारे प्रोग्राम होते हैं, बेसिकली ही इज द मैन हु इज डूइंग इट। The face might be someone else, but then he is the one who is leading all these important programs for KSG. And he himself is a very qualified educator, PhD in international relations, and polity and IR में इनका खास ज्ञान है। So any kind of academic doubts, Saurabh sir would be there. I would also be helping you out. Now I would pass on the stage to Mr. Saurabh Rajput, so that he can tell you about the content that KSG would be providing you in this program of PT Shala. Over to you, Saurabh sir. Thank you, everyone. थैंक यू मृणाल सर। हाय एवरीवन। आई थिंक अभी भी सारे लोग उतनी ही अटेंशन सुन रहे होंगे जितना कि आपने मृणाल सर को और खान सर को सुना। सबसे पहले जैसे खान सर ने बात करी, 239 डेज आर रिमेनिंग, तो 239 डेज को हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे उसके बारे में पीटी शाला है। सेकंड, जो मृणाल सर ने लास्टली बोला एनालिसिस एंड स्किल, उसके बारे में बात करूंगा। And third, I'll be sharing some indicative material for the polity, जिसका एक ब्रॉड ओवरव्यू हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जब सेकंड सेशन इसका स्टार्ट होगा पीटी शाला का, तब उसका एक डिटेल्ड ओवरव्यू आपके साथ शेयर किया जाएगा। So for time being, we can start with that indicative material. So in this indicative material, there are all the themes which have been asked from past years question, like from 2002 to 2025, like in the citizenship part or historical underpinnings or fundamental rights, fundamental duties, जितने भी सारे questions PYQs में आए हुए हैं
सारे के सारे इसमें हमने ब्रॉड थीम्स पे बनाए। तो फॉर दिस अपकमिंग वीक यू कैन गो थ्रू ऑल द शीट्स विच वी विल बी प्रोवाइडिंग आफ्टर द सेशन, आप इसको देख सकते हैं। और सेकंड पार्ट जो सर ने बोला एनालिसिस, तो एनालिसिस कैसे करना है? एनालिसिस में सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, हमें देखना है कि क्वेश्चन पूछा क्यों गया। सर कैन यू प्लीज शेयर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। यस, पूछा क्यों गया। तो जैसे इसमें लिखा है कि इवन हिस्ट्री हैज अ करंट लिंकेजेस, तो हिस्ट्री के करंट लिंकेजेस होते हैं, आई एम टेलिंग यू। सो हाउ कम दिस क्वेश्चन, आप कैसे आंसर करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 16 को। सितंबर 2024 में क्या हुआ कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड था उसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम चेंज हुआ जिसको हमने बोला श्री विजयपुरम। तो श्री विजयपुरम से एक क्वेश्चन आया श्री विजय, और जो उन्होंने 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो दैट्स हाउ दे आर टेस्टिंग द अवेयरनेस, दे आर नॉट ओनली टेस्टिंग द इंटेलिजेंस, दे आर नॉट ओनली टेस्टिंग द नॉलेज बट ऑल्सो द अवेयरनेस। सो जब भी आप कोई करंट अफेयर पढ़ो और उसका कोई नेम चेंज हो रहा है या फिर कुछ एनसीईआरटी में कुछ चेंज हो रहा है, तो लुक इनटू दैट कि अगर इससे कुछ क्वेश्चन बनता है तो मैं कैसे कर पाऊंगा। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यूपीएससी इज मोर इंटरेस्टेड इनटू एनिवर्सरीज, आई थिंक एनिवर्सरीज इन द सेंस कि लास्ट में 10 साल में क्या चीजें हो रही हैं, उसका रिपीटिशन। इवन यूपीएससी अपने ही 10 साल 15 साल पुराने क्वेश्चंस के ऊपर जाता है, उसको एज इट इज रिपीट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इट हैज बीन आस्क्ड इन प्रीलिम्स 2025 एंड इट वाज रिपीटेड इन 2016। सो बेसिकली एकदम टू द पॉइंट इन्होंने उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर हमें 2016 का बहुत अच्छे से पता होता तो 2025 वाला भी बहुत अच्छे से कर पाते। सेकंड, अभी हम बात करेंगे एनिवर्सरीज की। जैसे यूपीएससी ने 10 साल पहले क्या पूछा है, तो जब भी हम एनालिसिस करें तो कोशिश करें कि 10 साल पहले जो पूछा उसको फिर से देखा जाए। 2015 का पेपर, 2016 का पेपर, 2017 का पेपर, उसके सारे डायमेंशंस अभी भी इंपोर्टेंट होंगे। व्हाई? सपोज कोई एक स्कीम जो लॉन्च हुई है आपकी 2015 में, उसके अभी 10 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो अगर उसका कोई टारगेट ईयर रहा होगा तो वो अभी तक कंप्लीट हो गया होगा। अदरवाइज टारगेट के अलावा 10 साल कंप्लीट हो गए, 15 साल कंप्लीट हो गए। आई विल बी शेयरिंग अ क्वेश्चन लाइक देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2025 आई थिंक, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो अभी जैसे बच्चे मेरे पास आते हैं पूछते कि सर सारी स्कीम्स करनी है क्या, देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स। तो अब सारी स्कीम्स नहीं करनी है, जिनके 10 साल पूरे हो रहे हैं, जिनके टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, जो फ्लैगशिप स्कीम्स है उन्हीं को करना है, क्योंकि सारा मगअप करना इज क्वाइट नॉट पॉसिबल, राइट। थर्ड थिंग, अभी जो 239 डेज एज सर हैज आल्सो मेंशन्ड कि 239 डेज को कैसे लेके जाना है। तो 239 डेज में हमें अपने पैच वर्क को करना है। फॉर एग्जाम्पल हम सारे वो लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ प्री के बारे में पढ़ा हुआ है, वी आर ऑल अवेयर अबाउट द सिलेबस, मटेरियल सब कुछ है। तो जब भी एक रोड बनती है तो सबसे पहले हम रोड अगर टूट जाती है, बाई चांस हमारा प्री क्लियर नहीं हो रहा है, सबसे पहले हम पैच वर्क करते हैं। तो पैच वर्क के लिए वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर पैचेस कि हमारी दिक्कतें क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिवर्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है, रिवर्स आपको याद नहीं हो रही, आपको माउंटेन्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है, माउंटेन्स याद नहीं हो रही, आपको वर्ल्ड की लोकेशंस याद नहीं हो रही, तो आप क्या करें, डेली बेसिस पे एक लोकेशन याद करें, डेली बेसिस पे एक रिवर याद करें, डेली बेसिस पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकती है, इंटरनेशनल कोई बॉडी हो सकती है, बट डेली अगर एक आप बॉडी याद करते हैं, एक आप रिवर याद करते हैं, तो बाय द एंड ऑफ 239 डेज आप somehow 239 आर्टिकल्स को अच्छी तरह मगअप कर चुके होंगे, करेक्ट। सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, सर इफ यू कुड शेयर द स्क्रीन। Yes, sir. Next slide. So let me check. Previous one, previous one. Okay. So leave that. So basically, I was recalling a question on red senders. I guess 2024 में ये क्वेश्चन आया था। तो सबको लगा कि अचानक से रेड सेंटर्स के ऊपर यूपीएससी का प्यार क्यों आ गया, अचानक से रेड सेंटर्स क्यों पूछ दिया। तो हुआ क्या कि सारे लोगों को याद होगा 2021 में देयर वाज अ मूवी पुष्पा।
इट वाज क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया, इन द वर्ल्ड एज वेल. तो जब उसका सेकंड रीमेक आया पुष्पा 2, तो उस टाइम पे यही सेम क्वेश्चन उसी ईयर पूछा गया. तो पुष्पा 1 अगर सारे लोगों ने देखी होगी आई थिंक, तो उसमें लाल चंदन जो रेड सैंडल्स होता है, सैंडलवुड, उसकी स्मगलिंग के ऊपर स्टोरी है बेसिकली. तो वहां से कैसे यूपीएससी ने आपकी अवेयरनेस को टेस्ट करा और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के डाल दिया. इस साल एज अ जेन जी, एज अ सारे लोग को पता ही है, एक मूवी बड़ा पॉपुलर हुई, सैयारा. तो सैयारा के अंदर एक डिसीज होती है जो एक्ट्रेस होती है उनको हो जाती है, दैट इज अल्जाइमर. तो अगर अल्जाइमर के ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है तो ये कोई बड़ा शॉकिंग नहीं होगा. तो इफ दे आस्क कि अल्जाइमर की इज देयर एनी ड्रग, इज देयर एनी वैक्सीन, लाइक एनीथिंग रिलेटेड टू अल्जाइमर, वो कैसी डिसीज है, क्यूरेबल है या नहीं है, कितने इंडिया में पेशेंट है, तो ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट आता है, क्वेश्चन आता है, तो आपको बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना है. तो ये जो जो टेस्ट है ना, वो अवेयरनेस का ज्यादा है, स्किलिंग का ज्यादा है, नॉलेज का है, बट रिलेटिवली कम. जिन लोगों का अटेम्प्ट दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, उनका सिर्फ इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि अवेयरनेस कम है, नॉलेज पूरी है, अवेयरनेस कम है. उन्होंने अपने पैच वर्क नहीं किए. पैच वर्क अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम, नो डाउट. करेक्ट. इन दिस होल जर्नी पीटी शाला में मैं आपके साथ रहूंगा और मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन कौन सी एनिवर्सरीज किस किस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कुछ कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ. वी आर डन विथ 10 years ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन, 10 years ऑफ डिजिटल इंडिया, 20 years ऑफ आरटीआई, अराउंड 10 और 12 years ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. तो ये सारे ऐसे टॉपिक है जहां से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. तो यूपीएससी को बड़ा पसंद है एनिवर्सरीज, तो आप एनिवर्सरीज के ऊपर जाइए. यूपीएससी को बड़ा पसंद है अपनी ही एनिवर्सरीज, जो उन्होंने 10 साल पहले पूछा है, 15 साल पहले पूछा है, 20 साल पहले पूछा है. तो आई रिमेम्बर 2023 में क्वेश्चन था मार्सुपियल्स के ऊपर. तो मार्सुपियल्स के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है अराउंड 15 years बैक. तो वो 15 साल, 10 साल, 5 साल का क्रोनोलॉजी आप लोग बनाएंगे. मैं इसमें हेल्प करूंगा सब्जेक्ट वाइज. मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करता रहूंगा जब जब क्लास होगी जिस जिस सब्जेक्ट की, कि आपको इंपोर्टेंट क्या क्या है. सेम विद करंट अफेयर. करंट अफेयर में आपको कौन सी चीज कितनी पढ़नी है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग, आई विल बी सेंडिंग सम हैंडआउट्स, जिसको आप रीड करोगे तो आपको आइडियाज लग जाएंगे कि करना क्या है बेसिकली. जैसे श्री विजयपुरम वाला क्वेश्चन था, इसमें और भी कोई क्वेश्चन आता है तो डोंट बी सरप्राइज कि किसी मूवी से पूछ लिया. जैसे इमरजेंसी मूवी वाज क्वाइट पॉपुलर लास्ट ईयर, तो इमरजेंसी मूवी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आपको शायद पता होने चाहिए. ठीक है. इसके साथ ही मैं मिस्टर अंकित को बोलूंगा कि वो आए और बाकी पोर्टल्स एंड ऑल की चीजें क्लियर करें. उससे पहले वन थिंग, लेट मी क्लियर द डाउट्स विच आर इन कमेंट सेक्शन. So first of all, yes, movies. No, no, no. You don't watch, need to watch the movies now. But just for awareness. So there will be CSET lectures. Around 10 lectures will be there on CSET. Basically 10 sessions, 10 hack session कि आप कैसे CSET को अप्रोच करें, कैसे क्लियर करें, क्योंकि these days CSET is quite tough, right? उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं मेंटरशिप को लेकर के, तो you guys can reach me anytime. Harshita has asked, is there any discount for past KSG students? For KSG student, it is totally free. And from next session, the session will be on Zoom. This is the orientation session, जो आपको YouTube पे live दिख रहा है. हाँ, नेक्स्ट सेशन के लिए जो भी सब्जेक्ट होगा उसका एक शेड्यूल आपके साथ शेयर किया जाएगा, और सिर्फ वही लोग इसको कंटिन्यू करेंगे जो कंटिन्यू 2 क्लास को मिस नहीं करेंगे. अगर आपने 2 क्लासेस की मिस करते हैं तो फिर आप पेड वर्जन में जाएंगे, which will cost you something. Apart from this, awareness, one more thing. There are the things countering your gut and what if. I still remember last year there was a student जो 73 question attempt करता था और he was getting something 80 marks, but he never cleared prelims in last 3 attempts. तो लास्ट ईयर जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसको बोला कि आप क्यों नहीं अटेम्प्ट करते हो, तो वो बोला कि डर लगता है.
दैट फियर कि अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, डर लग रहा है क्योंकि मेरा एक्यूरेसी नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि कभी आपने ऐसा अटेम्प्ट करके देखा है किसी भी मॉक टेस्ट में या किसी में? तो बोला कि 2-3 साल पहले किया था और बड़े कम नंबर आए, उसके बाद डिमोटिवेट हो गया। तो 70 क्रॉस करने में बड़ा हिचकिचाहट होती है, रिस्क लेने में डर लगता है। तो उसको मैंने एक टेक्निक बताई कि 70 क्वेश्चन आप करते हो वो करते रहो, उसके बाद के क्वेश्चन जैसे सपोज 30 क्वेश्चन आर रिमेनिंग, उसको आप ओएमआर पे फिल ना करके अपने पेपर पे मार्क कर लो। पेपर पे मार्क करने के बाद सेल्फ एनालिसिस करो उसका कि उन 30 में से कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत। तो इनिशियली ही वाज एबल टू करेक्ट 13 14 एंड लेटर आउट ऑफ दिस 30 he was able to correct 21 and I'm happy to share that he cleared this exam last year by attempting 96 questions. So are you imagining that a little strategy can help you out? Okay, but this will be very individualistic. सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, सबकी अपनी अपनी, किसी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, किसी की एक्यूरेसी बहुत खराब है। बट द नेचर ऑफ दिस एग्जाम इज कि आपके 20 क्वेश्चंस कभी भी गलत हो सकते हैं, तो हमें अकॉर्डिंगली थोड़ा सा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और सेकंड थिंग जो मैंने हमेशा बोलता हूँ, एक अवेयरनेस और दूसरा स्किल, इस पे बड़ा फोकस करना है। जब भी आप किसी पीवाईक्यू को एनालिसिस करो तो रेदर देन जस्ट आंसरिंग, रेदर देन जस्ट नोइंग द फैक्ट, आप खुद से क्वेश्चन करो कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया। तो जब आपसे ये क्वेश्चन आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछा क्यों गया, आपकी एक अप्रोच बन जाएगी कि अब नेक्स्ट ईयर में क्या क्वेश्चन आ सकता है। करेक्ट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विल बी अवेलेबल इन अपकमिंग सेशंस। आप मेरे से कभी भी कनेक्ट कर सकते हो, कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे, और जो न्यू हैं वो मेरे से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग फ्री। और नेक्स्ट मैं अंकित सर को बोलूंगा कि वो आए और अपनी बातों को रखें। थैंक यू सौरभ, थैंक यू मृणाल सर, थैंक यू खान सर फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। अभी आप लोग पीटी शाला को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स अभी भी बच्चों के मन में हैं रिगार्डिंग द चैट्स आई एम सीइंग राइट नाउ। मैं बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट टेक्निकलिटी ऑफ दिस पीटी शाला एंड आई विल बी टेकिंग सम ऑफ द डाउट्स एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट। सो अभी आप सेशन देख रहे हैं इधर ऑन दिस यूट्यूब। आपको एक अटेंडेंस का फॉर्म मिलेगा इसी पेज पे। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। यस, सो इसमें ऑलरेडी एक लिंक दिया गया है, डाउनलोड द मटेरियल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिंक। सो दिस इज द अटेंडेंस फॉर्म विच यू हैव फिल्ड। अगर आप लोगों ने नहीं भरा है तो प्लीज़ भर दीजिएगा। इसमें आपको अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और एक यूजर नेम भरना है। Some of you must have already received the username from our team members only. If not, you can always reach out to Mr. Vad. Details are given over here. Let me give you example. Like you just mention your name, your email ID, your mobile number, and the username. Mine is ANK. All right. Right after submission of this form, मुझे एक डिटेल मिल जाएगा, सेशन लिंक, जो कि एक यूट्यूब पे चल रहा है आज वाला। नेक्स्ट वाला वुड बी ऑन जूम ओनली, तो जूम मीटिंग का लिंक आपको यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। एंड ऑल्सो द मटीरियल पीडीएफ। सो राइट क्लिक, बाय क्लिकिंग ऑन दिस मटीरियल पीडीएफ आपको एक और पेज खुल जाएगा जिसके अंदर जो हमें आज के सेशन का मटेरियल है, करंट अफेयर्स का इंडिकेटिव मटेरियल, एंड ऑल्सो द वीडियो विच Mrinal Sir has mentioned about the video of the PYQs discussed by Khan Sir in the archive section of PT Shala. Everything would be available here. Yes, there would be tests. There would be tests based on the session that we are taking today. So it would be like सैटरडे को हमने आपको पॉलिटी बताया, नेक्स्ट सैटरडे इसी का एक टेस्ट होने वाला है एंड उसके बाद उसका अगले दिन डिस्कशन होगा। तो टेस्ट का लिंक भी आपको इसी अटेंडेंस फॉर्म में ही मिलेगा। पीटी शाला के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, यू कैन सिंपली विजिट आवर मेन वेबसाइट। ऑन द होम पेज इटसेल्फ यू कैन फाइंड पीटी शाला का एक इमेज लगा हुआ है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको पीटी शाला के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। लेट मी बी वेरी क्लियर, द कोर्स इज नॉट फ्री, इट इज अ पेड कोर्स दिस ईयर। इट इज फॉर 2499 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। यहाँ पे रेजर पे का एक लिंक है, यू जस्ट नीड टू फिल अप ऑल द डिटेल, नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड पे नाउ। आफ्टर पेइंग द डिटेल्स would reach out to us and we will create your dedicated username. एक डाउट था केएसजी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिस्काउंट है या नहीं। इट इज कंप्लीटली फ्री। हाउएवर अगर आप लोग कोई भी 2 सेशंस मिस करते हैं, यू वुड बी कंसिडर्ड इन अ पेड मेंबरशिप।
तो मेक श्योर आप कोई सेशन मिस ना करें। ऑल सेशंस आर इक्वली इम्पोर्टेंट। पीटी शाला 2 सेशंस में होने वाला है। पार्ट ए स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, कल छुट्टी है एंड नेक्स्ट सैटरडे से टेस्ट होगा। वीकेंड पे चलेगा ये टिल 2 नवंबर, एंड 2 नवंबर से ये पार्ट बी में शिफ्ट हो जाएगा, जिसमें और सेशंस होंगे, जिसका एक डेडिकेटेड वर्टिकल प्लान होने वाला है। सो फॉर द फर्स्ट 5 वीकेंड्स आप मान सकते हैं इट वुड बी बिट स्लोअर एंड रहेगा, मोस्ट ऑफ इंडिकेटिव सेशंस रहेंगे। हाँ, टेस्ट भी होगा, उसका डिस्कशन भी होगा। आपको टेस्ट भी देना है, डिस्कशन भी अटेंड करना है, और आपको सारे सेशंस अटेंड करने हैं फॉर दो केजी स्टूडेंट्स एज वेल, बिकॉज अगर आपने कोई भी 2 सेशंस मिस करे, यू विल बी कंसिडर्ड टू पे अगेन फॉर द ज्वाइनिंग द पीटी शाला एज अ कोर्स। आपको ये अटेंडेंस का लिंक कहाँ से मिलेगा? आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अटेंडेंस का लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड द मटेरियल पीडीएफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिंक। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी भर दिया है, यू कैन गेट द मटेरियल फ्रॉम दैट देयर एज वेल। अगर आपको मटेरियल नहीं दिख रहा है वहाँ पे, कोई इशू नहीं है, आप दोबारा फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको मटेरियल का लिंक मिल जाएगा यहाँ से। इसी फोल्डर के अंदर पीवाईक्यू का वीडियो भी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को यूजर नेम नहीं मिला है, तो अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर प्रवीण सर को डिटेल्स व्हाट्सएप कर दें कि वो आपको आपके डेडिकेटेड यूजर नेम नोटिफाई कर देंगे। ठीक है, कुछ डाउट्स हैं मेरे पास अभी। We will be get out if we miss 2 sessions consecutively or if we miss any two. Any two, 2 सेशंस मिस किए, बाय बाय नहीं होगा, आपका फ्री सेशन खत्म हो जाएगा, आपको पे करके ज्वाइन करना होगा। अटेंडेंस मिस बाय सर्वर इशू नहीं होगा, अगर होता तो दोबारा फिल कर दो। एंड अटेंडेंस का फॉर्म वुड बी एक्टिव ओनली 10 to 15 minutes बिफोर द सेशन बिगिंस। सो फॉर एग्जाम्पल, ये सेशन हमेशा रहने वाला है यूट्यूब पे, अगला सेशन जूम पे होगा। सो जब जूम पे होने वाला होगा लाइक नेक्स्ट सैटरडे को, तो उस 8:45 पर ही अटेंडेंस का फॉर्म एक्टिवेट होगा। ऑन जूम वेयर विल वी गेट द अटेंडेंस? देयर इटसेल्फ बेटा, KSG India.com पे जाएंगे, पीटी शाला पे जाएंगे, बॉटम पे आएंगे, आपको अटेंडेंस का एक मार्क दिख जाएगा, जहां से आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। लेट मी शो यू ऑन दिस पेज। आप देख रहे हैं पीटी शाला के पेज पे पेमेंट करने से पहले अटेंडेंस है, तो आपको वहां पे अटेंडेंस मार्क करना होगा। अटेंडेंस मार्क करेंगे तो ही आपको जूम का लिंक मिलेगा, तो ही आपको मटेरियल का लिंक मिलेगा, तो ही आपको टेस्ट का लिंक मिलने वाला है। एंड ठीक है, डिस्काउंट हो गया, टेस्ट हो गया। एससी सेशन आई सपोज माधव, पीटी का पार्ट अभी शायद नहीं है, वो मेंस के टाइम पे हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट मेंस के टाइम पे करेंगे। पीटी शाला इज डेडिकेटेड ओनली फॉर पीटी प्रिपरेशन ओनली, प्रीलिम्स का पाठशाला है ये पीटी शाला। वन प्लेस ऑफ ऑल मटेरियल, यस पीटी शाला, थैंक यू। सेशन विल नॉट बी डेली विष्णु प्रिया। अभी इस वीकेंड के बाद टुमारो इज हॉलीडे, और प्रिपरेटरी लीव आप कह सकते हैं। नेक्स्ट सैटरडे संडे होगा, फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे होगा, 2 अक्टूबर तक वीकेंड रहेगा। There will be a dedicated schedule will be released after second phase begins. अगर आपने लिखा है देवम आपका बैच खत्म होने वाला है दिसंबर में, इट्स ओके, मतलब ये सेशन 9 PM के बाद होता है, 9 PM के शुरू होता है, आपका क्लासेस जनरली 8 PM तक खत्म हो जाता है। तो इट इज स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड इन सच अ मैनर कि आपका वो कोई भी क्लास डिस्टर्ब ना हो। टॉक अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप ऐसा करेंगे, बुक्स PW, अब अपना क्वेरी जो है अपने नाम के साथ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरा नंबर मैं अभी शो कर देता हूँ। मैं उसको क्वेरी विल शेयर इट विद खान सर एंड विल गेट बैक टू विद द डिटेल आंसर। जूम क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके अटेंडेंस फॉर्म में के अंदर मिलने वाला है, जूम पे होगा। ऑप्शनल अगेन थ्राइस आपने मैसेज करा है, ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी चाहिए, अपना नाम के साथ में अपना डाउट लिख के भेज दीजिएगा रिगार्डिंग पीटी शाला, रिगार्ड ऑप्शनल का डाउट, विल गेट द आंसर फ्रॉम आंसर ओनली। Yes, PT Shala is paid now. However, it is free from KSG students. Conditions apply that you need to attend all the sessions. If you miss any 2 sessions, you will be from the free one. You need to pay that. The fees is rupees 2499, including GST. इन अटेंडेंस डियर, पीटी शाला के पेज पे जाएंगे, बॉटम पे अटेंडेंस का लिंक है। टेक अ लीव इन द मिडल, देर इज ऑलरेडी क्वाइट लीव्स, आप मंडे टू फ्राइडे तक, मंडे टू थर्सडे तक, मंडे टू वेंसडे तक, जो भी शेड्यूल रहेगा आपके पास लीव रहेगा, आप उनको चेंज कर सकते हैं। As of now, sessions would be in weekends only.
डेली अटेंडेंस, डेली सेशंस नहीं है माधव, दे आर वीकेंड सेशंस। तो आप अपने आप को 2 दिन अलॉट करिए पीटी के लिए। पीटी इज जस्ट 239 days फा। तो अगर 239 दिन में से आप 2 दिन दीजिए पीटी को तो बेटर रहेगा। प्लान योर थिंग्स अकॉर्डिंगली। So I suppose I've taken all the doubts. Let me share my screen with the details of Mr. Praveen. So you can save this number 96543 76543. It is my number. For any technical doubt, you can always ping me up. WhatsApp is more preferable. And Mr. Praveen 8586004611 for all the admission support or all the username support, you can reach out to him. ये सरफराज, मैं एक बार और आपको शो कर देता हूँ अटेंडेंस वाला सेक्शन। आप पीटी शाला के वेबसाइट पे जाएंगे हमारे केएसजी इंडिया के, स्क्रॉल डाउन करेंगे, पीटी शाला पे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्लिक हियर फॉर अटेंडेंस। जैसे ही आप फॉर्म फिल कर देंगे यूजर नेम के साथ में, आपको यहाँ पे ले आएगा। यहाँ पे आपको सेशन का लिंक रहेगा जिस विच विड बी अ जूम लिंक। मटेरियल पीडीएफ का लिंक रहेगा जो कि आपका ये वाला फोल्डर होने वाला है। एंड थर्ड आपका टेस्ट का लिंक रहेगा जो कि आपका नेक्स्ट वीकेंड 4 अक्टूबर को आप का टेस्ट रहने वाला है। सो विद दिस आई सपोज टेक्निकल पार्ट हो गया है। It will be pasted here itself. No, your username is not a mobile number, roll number. Your username would be provided to you. You can reach out to Mr. Praveen. And whatever you give, you will attend the session today for polity. You will get the material. You already got the material. Next Saturday, polity का ही टेस्ट होगा। उसके अगले दिन आपको पॉलिटी का टेस्ट का डिस्कशन होगा। तो दोनों आपको सेशन अटेंड करने हैं। एंड पॉलिटी के साथ में एक सब्जेक्ट और लिया जाएगा। इट कुड बी इको, इट कुड बी ज्योग्राफी, इट कुड बी हिस्ट्री। लेट्स कंसीडर इट एज अ सरप्राइज। पार्ट ए वुड बी डेडिकेटेड सरप्राइज फॉर यू, पार्ट बी वुड बी अ प्लान थिंग। सरप्राइज इसलिए ताकि आपको नहीं पता होगा कि आपके पार्ट ए में क्या क्या हम करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं। बट पार्ट बी का पूरा वर्टिकल प्लान रहेगा, शेड्यूल रहेगा, विच विल बी डिस्कस्ड नाउ। सो आई सपोज आई हैव टेकन ऑल द थिंग्स। टेक्निकल हो गया है, डाउट्स भी हो गए हैं। खान सर अब आप आ सकते हैं प्लीज, बहुत हो गया, मेरा बैटरी खत्म। Yeah, I'm around. So let's just now just give them a brief outline of the program that we have got. Can you just, Mr. Ankit, show that screen that you have got for the outline of the program that we have? This program is going to be a weekend for the moment. Then we'll, like this, you see that the one before that. Do you have the before this also? The first session. Phase 1, sir? Phase 1. All right. Phase 1 that we're going through, there'll be 2 phases that we have here. In the first phase, we are trying you to acquaint with the UPSC questions. And for that, we're trying you to get a proper hang of the kind of question that you are actually going to get. So this is what we have got on this date. We will be having, let's say, orientation that we had, and you got material on polity. The next time you'll get something on economy, and then you'll have something on history, and likewise it will move. And then the subsequent day, that is on Sunday, tomorrow being Sunday, as Mr. Ankit has explained, will be off. So next day, which is Sunday, you would be basically having tests of the material that we have conducted. See, I told you that this is a very, very indicative kind of test. We want you to spend more time on the material that you have got in the form of PYQ. Look at the PYQ videos, look at the PYQ questions, and then orient yourself briefly with the material that we have given. But when we get into polity, like we have got 1 week, just a few pages, 10, 12 pages of polity. But when we get deeper into polity, in the phase 2, you can see here, we would be having those components which are broken further. Like, I mean, you will find that fundamental rights, and then you will find those institutions and the executive, the judiciary, the details will be given, and then material for that, and then the subsequent day, the test will be conducted. And when we conduct the test, at this level, we are going very, very broad. But then when we go to the next level, and that is the level that we're looking at the moment, this is going to be very, very intense. And there I told you that, you remember still, the type of question, the area of the question, combination of the two, and then the time series when we'll see that how you are progressing in that. That's a very unique
elements we have got, which will show you as to how you are performing when the question comes from executive, analytical type question. You seem to be making mistakes. So you will get to know that, and then you made a mistake on the 15 days ago, and then now you're still again making mistakes. So that you get to know that, hey, this is one mistake, I need to attend that. And that is extremely unique thing that you have got. If briefly, I know that we've taken a lot of time, and if Mr. Ankit could show the questions type that I was trying to identify, I think I have got an example of a very basic article. Let's take since we're talking about politics. We have got an article, Article 21. Nobody shall be deprived of life and personal liberty except for the procedure established by law. Now, in this format, you find that this information you have got, there can be a factual questions like this one we have got, which is a factual question. And this the same information that you have got. Can we have the second one, please? I'm not into the questions, but then I'm going to just expose you multi-statement based format. A lot of you who know the fact can handle the factual question, but multi-statement based question for the same information becomes difficult. And then for somebody, the former will become difficult. For somebody, this will become difficult. And we will let you know that, hey, this one is becoming difficult for you. Can we have another format, please? Multi-statement based. The third one. Then we have got only, none, or all format. And that's another format which UPSC has got. And I think I've got a thorough research done on this, on the various formats. Can we have the next one, please? The fact remains same, the same Article 21. But then this is like comparative questions that you have got. The next one, please. Assertion reasoning format. I mean, the same fact remains, but then the kind of questions are going to be difficult. And some of you are innocently unaware that which format I falter, which format I have a problem. And this is a very, very unique thing. First time being done. I have not seen anybody doing in this format where they are trying to expose you to the various formats of the question. And then UPSC is inventing new formats these days. And I'm going to expose you to all of them. We have got some more, Mr. Ankit, here. I think matching the following, the same article, Article 21, matching questions. So some of you may have difficulty in matching question. And analytical questions, there's so many types of it. And I have got a long list of them, and I'll take you through that. That's all I was trying to tell you, that we will acquaint you with the format, the area from where the questions are coming, the combination of area and the format, and then time series, your performance as you are moving. That is going to be in the second phase that we have got. But I insist again, like you must participate in all the tests that we conduct, all the exercises that we have got. We'll be having lots of sessions. Like in the beginning, we'll be having 2 sessions. Then we'll have 3 days a session. Then we'll have 4 days a session. And then definitely, as you people are aware, that we have incorporated CSAT also as part of it. And then I suppose for the registered persons, there are some recorded versions are also available. But however, I insist that you take the class and then take the test in the time provided, because we will be having a proctored test conducted. And within that time, I expect that you are submitting your test so that you also have the sense of timing developed in that process. And then I suppose tomorrow is off. That I would assume that it has been close to 2 hours that we will spend together. And I'm sure you are not the same person who was 2 hours ago. I've given you some insights. I've given you some points. Mr. Saurabh and Mr. Mrinal has been indicatively giving you lots of points in there. And then and one thing is for sure is that I think I like you to make a fresh start from now and then stay on this task. Trust me, this is the best you can get for PT. If you stick on with the system, I think we will collectively deliver. Another thing which I like to tell you is that, I mean, the PT is all about decision and timing. I mean, you start in the right time, and then the decisions that you learn how to make decisions, putting the finger in the right answers that we have got. And then if you are able to debug your delulu, as I was been using this word, I think you really can be sure of writing mains, and not one of those people who start matching their answers after giving PT. I think it is possible. It is absolutely
doable. And next session is going to be on Zoom. Mr. Ankit has already explained to you. And if you've got any doubt, you have the numbers there. Most of you have my numbers also. So I'll be very happy to have that discussed with you. And Mr. Mrinal, if you want to add something to this. No, so it's just fine. Since you were finishing, I just joined because I think the team at KSG has quite evolved over the years, and it has evolved along with the demands of UPSC. And it would be interesting to be a part of this and to guide students over this. So जितना ये लोग टेस्ट दे पाएंगे, जितना ये लोग एनालाइज कर पाएंगे, आई थिंक उतना ही इन लोगों के लिए बेटर होगा. And we all will be together with them in this journey. All right. Thank you very much. That's really reassuring, Mr. Manal. He always takes time off for you people, and then let's make good use of it. And I suppose we are going to meet next Saturday. In the meantime, we expect that you read the material which has been handed over there, and then also watch all the PYQs on polity for this week. And then we will be making some questions based on those PYQs. And also the handout which Mr. Saurabh has provided and the current issues that he has provided. The current scheme that we have got, we are covering the past ones. In the phase 1, we are covering the past ones. That is from January we are covering. And gradually, by the time we finish the phase 1, that is where we have finished with the PYQs wala section, we will start catching up with the current, not the past current. We will be covering the current in that. And then and I think if you have got something more to be added in this, Mr. Ankit. Yes, sir. We have recently started a DPT series. Some of you must have already seen it on YouTube as well. You all can access it. It is free on YouTube. Daily prelims test. Monday to Friday, Dr. Khan is already explaining all the tests. Around 10 videos already done there, polity and geography, and furthermore would be released accordingly. So कहते हैं ना वो सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल बटन दबा देना नोटिफिकेशन के लिए for YouTube and DPT. Thank you, sir. That's it. DPT is like, I mean, the last thing you should do before you sleep. मुझे ये पता है कि if you're doing it the last thing and you learn a word, you learn a fact, you learn a thing, or if you do not know, you go back and learn it before you sleep. So I think you should make it a routine that this is the last thing I do before I sleep. Anyway, I think we've taken too much of time today. Hopefully, the subsequent sessions will not be as long. We are very excited to share an absolutely new methodology. And then I suppose this PT preparation has to be actually, I've been using a lot of the lingos of your goated preparation that we have got. It's going to be goated hopefully. And if we just stick around, we'll deliver. That's a promise. And on that note, I would like you to wish you good night and then hope to see you next Saturday. That is on 4th of October. Is that 4th of October that we're going to meet again? And then watch the video, read the handouts, and then get back. Some of you have not been given your those codes and then usernames. They will be delivered by tomorrow for sure, because we did not expect such a large turnout. And then it's very overwhelming and it's very, very heartening that we have got such a large number of people have shown faith in the KSG. And this number is growing, and then could not keep pace with the kind of sending you, because the manual exercise that we do. We like to stop it here, and then good night to all of you, and thank you to all of you. Thank you.